of today. And I would like to request Professor Narayan Sethi, Department of Humanities and Social Sciences, NIT Rourkela, to please come and chair the session. I would also like to invite Dr. Raju Moiti, Indian Statistical Institute, Kolkata, to please come for his talk. Thank you. How many people are there? So this session is till 11:15, I think, or 11 o'clock. Let's see. The program schedule. So good morning, one and all present here. So we are going to start the first session of this day. Uh, so the paper presenter is Dr. Raju Maiti from supposed to ISI. be Professor Anil Kumar, Uh, but he is not here, so in his place, uh, Professor Raju Mukherjee will deliver. Dr. Raju Maiti will talk that the topic working with rural entrepreneurs, evidence from network board farming and a community park initiative in West Bengal. So you can speak that. We have two presentations, right? In this session. So half an hour. Half an hour. Okay. Thank you. 2+1. Okay. See. This one. Next. So I'm supposed to talk. Supposed to start at 11:15, I guess, in the second session. But it's okay. It's always, good to visit a new place. The new place is like this ISI Grady campus. It reminds something like we are in a forest area. Uh, yeah. No need mic. No need mic. Just because it's a small room and my voice is quite louder, so I do not need any mic. I guess. And before I start the technical, of course, my presentation will not be too much technical. I would like to first give my heartfelt thanks to Dr. Charan Behra for inviting me. Although I am not expert in entrepreneurship or something like that. My background is mostly statistics. I do teach uh, empirical macroeconomics. Especially, I am expert in. I would say not. I should not say expert, but yeah. Since I have been teaching time series analysis, advanced time series analysis for last I think 5 years. So I can think myself as an expert in that area. In fact, one of my MSQ students also is supposed to be here, and he will give his lectures in the second part. Who is doing one project with me, yeah. So yeah, I think my half an hour lecture will be more, I would say, informal and towards the young guys, not the faculty members, because they are, I think they are more knowledgeable than me. So why we come here and what is the title of this summit. The summit, it's a national rural entrepreneurship. Now, is it really relevance today? Because my
I would like to give more emphasis on practical sides, not the theoretical sides, that how survey is performed, how the data is collected, how actually things are evaluated. I would say we really today if you look at the current scenario, so we are all actually living something like it's a money-driven society. So everyone actually looking for money, and especially stable job. They should have some good earnings and something like that, and a good life. And because of that, people often move from rural to city, urban area, right? Because they think that urban area has more, I would say, has more, utilities or more advantages, more facilities, and because of that, people actually, and if you look at, in fact, we had lots of discussions. One of the, I would say, considered him as an economist because of Professor Behra. I was connected with him. His name is Tulsi Tawari. So he is supposed to be present, but he gave a lecture on over online. That's what I learned today itself. In fact, I saw also in the now. We had a long discussions regarding this economic side, this rural-urban, the migrations and why actually it's happening. What is the quality of life? If you look at Kolkata, if you look at Mumbai, if you look at Delhi today, you will see that, in fact, whenever I see in Kolkata, I often see that it is more congested. It takes almost 1 hour to travel from one place to another place with only 8 or 9 kilometers. Why it's so happening? And also, even if you have a bike or if you have a private car, you cannot actually, you cannot think that you will quickly reach to the place that you want to reach. And that's why people often actually rely on metro over the even the own car. And this is happening because the thing is that more rural people they have migrated towards the city or urban area. So now here what actually we are doing in this particular project. So it is as you can see, working with rural entrepreneurs, evidence from mentor goat farming and community park initiative in West Bengal. So you can think of that this is more like a I wouldn't say it a charity kind of things, but we really want to start a practical side of this rural entrepreneurship. That can we train the rural people to develop an entrepreneurship skill, and the kind of facilities that they are getting in the rural sites can they use at their best advantage. So that's the objective of this project. So we'll see it. Now, you see, as I already mentioned, that why this rural entrepreneurship is key to inclusive and sustainable development. Many programs focus on short-term training or one-time financial support, and but most of the if you see that for example this rural summit, okay, this is something like a one-time summit. People come here, spend 2 days time, have good food, then have a good time. Some people actually after the summit they will probably travel the places nearby, the some historical places, something like Deoghar or some other places like that, and enjoy a beautiful, especially in this winter, the weather is so pleasant. So one of the purpose of myself also coming here, I say greedy, is to get some time. Even whenever we go for a conference, we always actually try to plan that one day we keep ourselves so that we can visit some places. But and that is the one time kind of one time summit. I mean one time get together, talk, and then actually go back and then forget. Okay. Now that is the kind of things happens, that we come here, we discuss so many ideas, and then go back, and nothing will actually become fruitful. And that happens, even if you look at the some government project, you often see that politicians talk lots of things that this will be done
this will be done. And they actually started, and then suddenly you will see that after 5 years nothing happened, everyone forget everything actually, and then when the problem again actually comes, then you promised that you will actually, for example, something like say Ganga cleaning or something like that. So people often actually make big promises and then forget. They go back and then they forget. But in this case, that is called one-time training. One-time training or one-time financial assistance. For example, suppose you want to start a rural entrepreneurship, okay, and you have some big mind, say, or big people, and who have some capital to invest. Some have I would say they are maybe the management skiller. I mean they have management skill. So they talk and then start one business and then they go back and forget one time investment, that's it, and they think of that after 1 year probably my one time investment, that is 5 lakh rupees, will be actually returned back to say 10 lakh rupees, something like that, and nothing I have to do. And that's what actually we do, right? If you have a money, you just put in the bank and you think that your money will be double after 5 years or 10 years, and no need to worry about something like that. It's a kind of like a one time investment, and that's what actually we always actually look for, that short time, that one time investment done. But that is not the way actually rural entrepreneurships will be will be happen. If you need a long term, and that's why you often see that stock market or something like, even when we do a time series analysis, we see that short term investment versus long term investment, or short term forecasting versus long term forecasting. So everywhere something like people are always short term motivated, that we need immediate return, something like it. And everyone knows that that is not happen, and that's why those are who are economic financial expert, they often say that don't invest in a short term but invest in a long term. So here our objective is that long term versus short term or one time. Now you see this one, in the beginning also I mentioned that lots of people move from rural to urban because of this many opportunities that probably the city life can give as compared to say rural life. We know that in rural life the beauty are there but no money is there. I'm from a rural side in Midnapur district. So whenever I go back, I always spend my time with my father, who is an agricultural, I mean, who is a farmer, and he's a very nice farmer. So I always spend time, and always I also talk to some of the local people that why you want to work as a goldsmith in Mumbai or say in Delhi as compared to doing a farming in your own land. And he said that there is no money. There is no money, in the rural. If I spend at least few days or few months in working in Mumbai or Delhi, I know that for sure that at the end of the month I will have say 10,000 rupees or 20,000 rupees or 50,000 rupees, whatever. And after 5 months or 6 months, when I will go back to my, or I will return to my home, I will have some money to to see and to But that is not that means actually the liquid money is not there in the farming sector, and that is the problem. And because of that, people are. But that in urban area how they live. You probably already experienced that those who are lower middle class or lower class people, how they live. They have only, I often see in Kolkata, the Ganga side. I often actually walk to the Ganga side, and lots of people from Bihar, from Jharkhand, they live as a taxi driver or some actually other other sectors. They have only one small room. They have two kids, wife, or living, and they are there for year after year, because they know that at the end of the day, if they can drive a taxi, at least they will earn something like say 500 or 1,000 rupees per day. That is ensured in city life, but that is not ensured in urban in rural area. And because of that, people often move to the urban area over the. That is that. And also, if you see the for example in city, the expenditure is high. They know that.
but they know that hospital is accessible to them, and all the benefits that they are getting from the urban side, and as a result they move to the rural to urban. Now, here I'm putting some statistics that the statistical figures from different actually survey, or if you check in the net, that you will see that how much actually population live in rural versus urban. You can see that 60 to 65% people, they are still living in rural area, and urban area is around 34 to 35%. What about the land share? The land share is almost 80 to 90%, versus the urban is 10 to 15%. You see, only 10% to 15% land is belong to the city, where 30 to 40% people live, and 90% land belongs to the rural area. But how much people are living there? 60 to 70%. Okay. And look at the GDP contribution. So those who are actually, probably most of you are familiar with the GDP. GDP is a index. It's actually, it says the health of an economy. Okay. For example, you probably have seen this in news that India surpasses, say Japan, or within a few years probably they will actually, take over, say German, or second or third actually largest economy, something like that. We have now 4 trillion, US dollar economy, something like that. So GDP is a growth rate. Now, if you look at, and in fact, last Tuesday we had a meeting with Ministry of Statistics Program Implementation in Delhi, their office. So our actually project is related to this GDP calculation or something like. Now, if you just, although these figures, I'm not very sure whether how much accurate this figure, but let's see that 10% land in urban, 30% to 35% in urban population, but look at their GDP contribution. GDP contribution is almost 60 to 65% as compared to 30 to 40% from rural India. In fact, I think if the data is collected honestly, and there probably the ISI in OS, they can actively play a major role. In fact, our job or our next project is related to that how we can make a survey so that we can get this GDP figure more accurate. And in fact, in recent time, news came that India's GDP calculation or GDP data is a very low category data. It is classified as Group D category by IMF. Have you seen that news? It was published in the Hindu, I think the Economy Express or Economic Times, something like. So it is that means actually the data is not reliable. It is something like it's called manipulated or something. So I'm not, but still let's assume. So you see the rural GDP contribution versus the urban GDP contribution. Less people, less land, but their contribution GDP is much higher. In fact, recent study I have also seen that they compared the whole Bihar with only Mumbai city. The India's GDP contribution from the Mumbai city itself, they said that 20 times more than the whole Bihar. You see the Bihar, a big population, a big land size as compared to a city called Mumbai, which is people call dream city. Now, a small city, their contribution in GDP, that means 20 times higher income than the people who live in the Bihar. So from Bihar, how much economy is generated by the Bihar people is 1 by 20 as compared to the Mumbai people. So that means people who live in Bihar, if he generate 1 rupees, people who live in Mumbai, they generate 20 rupees, something like that. Okay, it's a 20 times. Can you see what is the disparity? You have the land, you have the population, but your contribution in terms of the economic growth, that means you generate less money as compared to the city people like Mumbai, who has no land, because of course you can see that industrial evolution and something like. I'm not actually going again, there are so many nice statistics. In fact, one of the statistics I'm telling you,
that if you look at the China versus India, okay, and you know that GDP in terms of China is second largest country after USA, right? And India is now actually fourth largest. Okay. Now, what is GDP? GDP says that how much we generate economy. For example, you work in a say farming sector, and in a day produce something, and that has value, say 100 rupees. Someone actually live in other sectors. He spend one day time and generate say 20 rupees. So if you add them, say at the end of the day, so 120 rupees is generated. That is called the GDP. So how much? And then if you look at the 100 or 140 crore people, everyone generates some money. So or generate some money, and that if you accumulate, that is the GDP of a country. Okay. Now if you compare the China with India, it says that China, whose GDP is the second largest, in fact actually it has probably 20 trillion US dollar, and we have only 4 trillion USD dollar. If you compare their economy versus our economy, I mean their GDP versus our GDP, it says, just note this, that our GDP is that 4 trillion dollar GDP is mostly consumption driven GDP. That means we consume much and produce less. And on the other side, the China's GDP is 60% is production based and 40% is consumption based. Did you get my point? So that means yeah, here actually the tricky point that that how GDP is measured. So whenever you consume something, that is something like that means someone is produced. Okay, someone is produced. So if you consume 100 rupees things, that 100 rupees goods, that will be actually counted in the GDP. So our 4 trillion dollar GDP, out of that probably 3 trillion dollar is just we consume. That means we import so many things. You probably heard, last time a few months back when there was a fight between Trump and Modi government. There, Modi told in a rally that from the morning to evening we should actually figure out how much the foreign things we use, right? And try to use yourself in such a way that you should use more Indian goods than compared to the foreign goods. That's what actually his suggestion. Now, the thing is that, but the market is not running like that. We always look for example, when I went to Varanasi, I look for a cheaper thing. Although my concern is always say Kolkata people or say West Bengal people, but whenever I want to buy something, I always look for a good thing, but at the same time, a cheaper price, right? Whether it is produced by Varanasi people or produced by Kolkata, I don't bother. If I get 100 rupees Banarasi sari as compared to say 500 rupees Banarasi sari in Kolkata, I always go for the 100 rupees Banarasi sari in Varanasi, right? I do not bother about the who is produced. So that's actually the market, and that's what but anyway, so that is the larger. I mean actually the overall statistics why this rural versus urban is so important. Now here is one actually another basic statistics about the migrations just calculated based on the last line. If you look at, nearly 1 out of 6 Indians is a rural to urban migrant. What it says, that means out of 6 people, 1 people always, that is the recent statistics. Maybe I would say that statistics, the honestly calculate, if you honestly calculate that statistics, probably that will be much higher, maybe 2 or 3 out of. No one actually wants to live in. I in this room, if I ask any of my students or any of the participants who are present here, that do you want to live in rural area? No one will say that. I want to live in rural area. I always want to live in urban area because urban gives me more actually charming life as compared to the rural. And that's the actually that's the one statistic. So that's the gap, increasing rural urban migration driven by income and employment gaps. Youth migration often reflects lack of local entrepreneurial opportunities, and also you see the seasonal and circular migration. For example, in fact, yesterday when I was talking to the taxi cab driver who actually took us from Kodarma station to ISI Giridi, he was telling that
that in Bihar or in Jharkhand, you know, during the monsoon, during the good time, people are do lots of work in the field, grow agricultural products. But when the off season start, they always actually go for marriage. That's the funny, and that time actually, that if you don't have any work, go for the marriage. That's what he was telling. So that's actually seasonal factor. So when actually something like there is no monsoon, so people, when there is no actually agricultural activities, so people try to move to the urban area for looking for better options or looking for some income, some liquid money, and then again the monsoon start, they come back to the rural, spend time in the agricultural sector, and that's what also the migration happens. Okay, now here is some more statistics about about the income and expenditure. As you know, that it is very hard to know income of a household. You know that. Most of you who are working in either in economics or in survey related project, that if you ask a person that what is your income, you know that that's a very sensitive question. You should not ask, and you never get the honest answer. Okay. So what is the way actually knowing the people's income or knowing the people standard of living? The way actually is that it's a basically ask their or look at their consumptions, that how they consume. Okay, and that's why NSO make this survey, household consumption expenditure survey. Often 2 years interval. No, not 2 years interval. Last time it was happened in 2011, and then after that recent time in 2020, and then 2023 and 24. So they have consecutively two households consumption expenditure survey. The idea is that you, instead of knowing the income of a group of people or of a household, you just actually look at their income, look at their expenditure, and from there you get a sense that whether people income is increasing over time or not, whether people are in a better positions to consume more goods or not. So that is the thing. So it's a kind of like a proxy of income. So consumption is a proxy of income. Okay, and if you look at the figure, that average consumption expenditure of a rural people versus an urban people, you will see that 4,000 versus around 7,000. So it is almost double. That in city, if you want to if you live in a city area, your average expenditure in a month will be around 7,000 versus if you live in a rural, your average expenditure will be 4,000. So rural rural area is still cheaper than the urban area. But if you compare, again here it is a time series comparison, that if you look at the trend, that whether the capability of spending in rural area and capability of spending in urban area, whether it's increasing or decreasing, you will see that 9% growth in rural area versus 8%. That means that rural people, that is actually their services. Whether, again, the data quality, I am not in a position to judge that whether the data is correct, but it says that rural people over actually time, the capability of consumption is increasing. That means the gap is narrowing. The gap urban versus rural. That's what actually people say. Now here is one. Sorry Yeah. to interrupt. This is the NSS data. This is NSS, so household survey data, because they made 2012 and 22, and then they made actually 2023 and 24. So this is NSO data says. So this says that 9% versus 8%. Now here is a one actually tricky point. The tricky point is that that public distribution. That means actually people are getting, say, free rice, some free actually through public distribution, public food distribution thing. And if you consider those things, so they actually consider those things into this figure, and through some technical imputation, they actually come up with that. So if you exclude that public distribution, those commodities, then probably this 9% will be, I think, actually lesser as compared to the urban. Yeah, that's my actually hunch. It's because of
because anyway, it's still actually, there is no way that rural, people have chance to have higher income and as a result, higher consumption figure. That actually is still unbelievable. Okay, so same thing that again that says that how this urban versus rural is the gap is narrowing down. So that means this says that rural people also have the higher consumption, and to some extent I'm not very sure that how whether it's a yeah, but it is true that if you look at the rural people, they also nowadays I often see in my rural area that people use Flipkart or something like say Amazon to buy things. That means rural people have access this internet, and because of that, they have their actually consumptions is increasing over time. So that's so that means the urban and rural consumption figure, that gap is narrowing down. Yeah. And this is another statistics. I'm not going, how the interpretation of the Gini coefficient. I'm just giving you, the Gini coefficient gives you the income inequality, and it says that rural at this moment, the way they calculate it, the rural Gini coefficient is 0.23 versus the urban is 0.28. So higher the value of Gini, that means actually the income gap. I would say. That the lower the value means actually people they are everyone have some kind of like a equal income, and if the higher value Gini coefficient, that means some people are very rich and some people are very poor. So it still says that urban has higher Gini coefficient versus the rural. Okay, so these are some summary from this survey data. So I'm not actually going to this, and also I have also mentioned already the GDP contributions. Similarly, the income expenditures. So now I'm coming to our part, that what exactly we are doing here. So in this, this is very relevant to this this summit that the Professor Behra has come up with, and it's really actually I would like to thank him because although it seems like a one time actually get together, but remember that this is probably the starting point, and we also started just few months back, and from there we came up with actually 2 projects. Okay, and after having discussions over online week after week, we started actually 2 projects. One project in the Jhargram district of West Bengal, which called Jungle Mahal, and another district is in my part, which is the West Midnapur Ghatal subdivisions. So in the Jhargram district, so so in the Jhargram district, what we did is that because I know actually people there, some young guys, I'm associated with some social organizations. It's a Vivekananda related organization, so we have connections with young people. So I know few I would say a very Jhargram district is all about SC tribal people. So they are mostly the tribal people, and these tribal young guys, they are honest, and as I said, I have actually an advantage to spend time with them, and I know them. So what actually I was asking that what you want to do in your life, because there is not much education, so as a result you cannot compete with city people or you cannot compete with government jobs. So can you do something by yourself, and what kind of Yes, 5 minutes. okay. Yeah. Oh, I see. I think I started around 10:05. So yeah, yeah, and I have only 2-3 slides I think to share because some of our photos. So yeah, so in this Jhargram district, so what we actually tried, we talk to these people that what are the facilities you have, or what kind of
advantages you have. So they said that if we do some farming, then that will be actually good for us. Then we said that what kind of farming? So they said that goat farming is good, and usually each family has some goat, or something like the chicken farming, or what you call that those poultry farm, yeah, poultry farm. So we talked to them, and then we at first told them that can you arrange some bank loan without Mortgage. Mortgage. yeah, without any actually mortgage or whatever they have term, I think. Collateral, yeah. So can you, then they tried, and I tried to connect with some my known people, SBI, that the bank manager. But anyway, so there is a very technical NABARD. We studied some actually government loan. So, and it seems like it's difficult. They visited local banks there, talked to the bank manager, and they but anyway, it took another 4 months, 5 months spent over. So but still actually nothing was doing. So what we did from my side, me and my one of my actually colleague, senior faculty, so we thought that how much you want. So they actually give us a very nice actually figure, that this is the building structure, this is the water connection, this is the electricity, this is starting actually goat. So they gave me something like 3 lakhs rupees or something like that. So we said that okay, we are giving 2 lakh rupees, you start in that, okay? And we give initial 2 lakh rupees, and then we went there, we visited the places, and we do the survey that whether things can be done or not. So it seems like, yeah, the place is, in fact, I can I know, I'm not very sure whether the pictures are nice or not. Yeah, you can see that we visited. Oh, some pictures are I couldn't actually, because of hurry, or I was traveling, so I couldn't rotate the pictures. So you can see that we visited the site. It was land, and then now actually it is actually see that the farming is under constructions. So one farm, goat farm already started. We still yet to get the electricity connections. We yet to get the water connection. So because without electricity you cannot get the water. And in the meantime, what we did regularly for the first actually 2 months, every week we meet together over online. In fact, Tulsi Theory was present. We had a discussions how to actually do the accounting, and how actually you should. And we said that for first 1 year we do not need anything from you. You just actually go with that. We don't actually. After 1 week, after 1 year, you have to actually, because if I give it for free, then there is no actually no I would say no actually what it says no I mean no encouragement or something like that. So you have to actually return it back with say 5% or 1%, 2%. But we know that we don't expect anything from there, because it's a 2 lakh rupees is nothing. But it's a small start. Okay, so that's actually already started. 6 months we started on July, and then there was monsoon period, and because of now they have already 20 goats. Okay, so that's another project. And the last one is something like one actually park initiative that we actually started in Daspur, police stations under the Ghatal subdivisions in Paschim Mednipur. This is actually done by one young, actually I would say, lad, and we have already invested there 2 lakh rupees. We actually not buy land from the landowner. Some landowners we took it for 10-year lease or something like that, with some rupees, and we started with that. The work is going on. There is a big actually pond. So that pond we actually try to think of putting some boat, and so that city people can spend their time. And this way probably we are thinking at this moment, say 10 to 20 people's works will be generated. Okay, and we means over time probably we will try to make it more formalized, so that at the end of the day people should have some stable job. At the same time they want a quality life, and that's what we. So it is a very small start in terms of this national rural entrepreneurship. We want to be on the practical side, not on the theoretical side. We know that we are actually, our job is stable, our income is, so nothing to lose now actually we from our side. So whatever we can do towards society, especially for the rural people, we have started, and it's very good place that we start these things
for the first time to the people, though I think actually we should not share, but she still actually, still the people are here. So in fact, this is, I would strongly encourage, maybe you can give if you are interested, you can give your number. We have a regular WhatsApp meeting or Google Meet. So if you want to actually, see that what progress things are going on, so maybe you can, connect with us. And that's from all sides, from my side. Thank So, Dr. Rajiv, so give my comments, few comments about the presentation. It's a very nice presentation to discussing from that rural urban, that in terms of income and then, the expenditure and the GDP part also. So, though it's a beginning that the evidence from the mentored board Hadi, we find that this project is an ongoing project. So there is no finding so far. So hope there will be a much finding and we will get the mutton. Yeah. So no finding. Yeah, exactly. This is a No form of outcome yet. This is a form of social entrepreneurship. He is voluntarily contributing his money for the upliftment of the rural poor. So this he must be. It's a very commendable, very actually commendable job. You have done fantastic activities. As faculty members of the eminent institutes, we must have also some contribution towards our own societies. This is action-oriented research. Yeah. In anthropology, we call it action business. It's all about the action business. So actually, it's a very commendable job. Yeah, to add to your presentation, actually similar kind of entrepreneurship has started in Odisha. We call it Goat Bank. Okay, it's a very senior IT professional left job and started Goat Bank in a remote rural tribal belt of Odisha, and it's a hot selling, and the government is also supporting. What is that the bank all about? You will have to give goat to the poorest of poor of tribal people. Okay, they will have to return 2 goats. You take 1, okay. After that, you have to give 2. Then that bank will flourish, right? And this husband and wife, you can check online. So they are highly appreciated nationally, recently by Prime Minister, our Education Minister, Sri Dharmendra Pradhan, right? And these young guys, they left a very, great job and all comforts, and they started this business. It's a very successful model in Odisha. So Goat lending model. yeah, goat lending, that is goat bank. Goat bank. Okay, lending and also taking. Taking. Right? It's not one side story like Professor Maiti mentioned. Actually, that is very nice, and you guys started it's a premier institute like ISI, and out of your love, affection, or whatever you have started this great business with your own fund. So very difficult from professor's side generally to spend this much of amount of money at a time. It's a great work. Apart from that, actually from your initial remarks, always you are questioning the data, IMF, and because you are a statistician, right? And you mentioned that you are an expert. So far, 70 years of independence, right? Why suddenly people started asking about the, that authenticity of Indian data? First question, and again you started asking questions about NSS data, whether it's a honest calculation or dishonest calculation. If there is any, I don't have any idea. Whatever data collection process is in India. So far, I have been, since I'm a student of economics, NSS and others, whatever data they collect, we consider it's official. And when you were raising this particular question, honest calculation, dishonest calculation, I don't know so far. So you also have not mentioned. Yeah. And apart from that, okay, now IMF is saying that authenticity or the kind of data gets reflected in GDP is not acceptable, or does it comply to international standards? We don't know. Second part of the story, IMF is using all our data, right, and giving forecasting that yes, India is going to be the second largest, third largest, or first one, Right. okay, by 2050 or 2047.
On what data? Is the IMF collecting data? Okay, or they are doing this kind of a forecasting on the basis of our data. Whatever we are collecting, all our organizations like ISI and others, they are pioneer and whatever. So another question, when you discuss about rural and urban divide, so far contribution of the GDP is concerned, right? You said that 35 to 40% as per data, right? Contribution comes from rural area and 60 to 65. Uh, but you are silent about the green GDP. You know, Mumbai contributes. If you look at reverse is true. If you look at the contribution of waste, which is harming our environment from Mumbai city per day, it's much more than what Bihar does, right? That aspect we are not highlighting. And statisticians like you should also keep in mind that we are just discussing that Kuznets formed, coined GDP, that conventional GDP. We are not discussing about that green. Why I am telling you? Because time and again you mentioned in your talk that rural area, that is standard of living, the beauty of a landscape is very nice, environment is quite good like this particular campus, right? So if you go by this conventional data, 30 to 35%, 40%, then what I think, if you look at the green GDP concept, right, where Scandinavian countries are trying to incorporate in their national accounting process, they have very successful, like Switzerland, Sweden, Denmark, they have incorporated. We have not touched it. Even Americans, they have made a lot of research. Okay, they are not also focusing on green. If you take into account the calculation of a green GDP, right, then whatever hypothesis you mentioned, that Mumbai, one rupee, Mumbai and 20, reverse would be, reverse maybe. Yeah, there is no free lunch. Yeah, so the amount of. So the moment you generate 20 rupees, you basically exploit. Absolutely, absolutely. Yeah. Exploit natural resources. Yeah, yeah. Okay, at the cost of a Mumbai, at the cost of a rural people, at the cost of a Bihari people or Odisha people, whatever. So look at Delhi, New Delhi. How much waste and how much pollution there. I am coming from, so it's a gas chamber. Yeah. Okay, so all these, whenever we are discussing, as a statistician, you please clarify what is the honest way of data collection. And presently, I just want to know, since you are a very young professor and part of a ministry and deliberation related to GDP, whatever you mentioned. So you please tell us actually what has gone wrong with our data collection process in the recent past, or when it got started, and why IMF is making this kind of, on what basis you are also using our data for your macroeconomic forecasting. Of course. When you don't have faith in your data, your all forecasting would go wrong. Wrong, right. As a professor, Yeah. when you are questioning the data, then whatever you are doing, whatever research, Yes, okay, right, forecasting right. Yeah. related to macroeconomic parameters, that will go wrong. So you please clarify. Yeah, one point here I just like to make it that again whenever I said that the suspicion of data, so I mentioned that it is because of the huge highlight from the IMF side, and I totally agree with that. Sometimes that the foreign institute like IMF, who actually I would say they are headquartered actually from the Washington. I mean actually New York. I think. So. Uh, uh, so it is always actually true that who knows actually the reason behind coming right now at this moment, that data quality, or asking that data quality, and because of that probably actually in my understanding, or maybe my subconscious mind, that these questions is always means already actually in my mind, that means, is it that whatever data that we are working, is it that means not very good quality, and because of maybe you said it very correctly, that as a young aspirant or something like that, we don't want to actually hear this news, that no one should actually question that whatever your data is. At the end of the day, when IMF actually, as you mentioned, IMF comes with this figure that they are based on our data. In fact, I asked this mostly in my meeting, that
that how they come up with the figure that 6.5% growth or 7% growth. Absolutely. And even I checked with the time series comparison, the GDP is calculated, that first round, then revision, then advanced calculation. And I checked the growth rate for the IMF for last 10-15 years. So I also shared with them that I compared this, that what was your correct figure after the advanced calculation of GDP and what the IMF forecasted. So if you look at almost every year the data is almost matched. That means whatever IMF says that 6.5%, the actual GDP is 6.5%. Few years there is under and overestimate, and that's actually quite wrong. And also I asked these questions that why actually I raised this question, because one actually in my subconscious mind, again this is actually coming from my actual understanding, that country like India, which is more like unorganized means more unorganized sectors than organized sectors, and unorganized sectors data comes from the survey. Now is because every month, every week means every quarter you have to come up with this GDP figure. Do we have the capability to actually go and make the survey and get the data, and then get revised figure of this quarterly GDP calculation? And I asked these questions. And because again, as a young actual people, I have not much experience, and that's why. No, we have a lot of expectation from you. Why I'm saying, you say that if you look at the Chinese data, right? Oh my goodness, their data So- given actually. You are saying No data coming outside. No. Only it is based on their Absolutely, data. absolutely. In case of India, all data, okay, it is in the public domain. Yeah, it's a right? transparent kind of. Yeah, So, of course. but again, the duality of IMF. IMF is also forecasting about Chinese on the basis of whose data? Chinese data. Yeah, exactly. And like you mentioned, that whatever you forecasted, it's matching with the IMF. Yeah. It is based on our data, right? Yeah. And we are collecting it, right? Yeah. Again, you are questioning that your data and your base year and everything, it's not all right. Okay, so don't confuse us, right? And India is a very good history of collecting data, like all our eminent leaders. Okay, and Including PC Mohammad and ISI. Yeah, Absolutely. of course. And Last Circle survey was and actually. it is a well-established framework. And like you mentioned, that unorganized sector, I do understand. Okay, 10% variation is all right. It's a big country. 10 years it takes to collect a census data. It's not a small country. Yeah. Okay, Scandinavian countries I quoted for the sake of argument. But Scandinavian countries, kitna hai? Yeah. What is the population? Even 27 countries, they add the European Union and Another US. What is the population size of US? 33 crores. So take by UP. yeah, absolutely. Right? So, bhai, we are having our own issues in spite of that. This is one of the best data, models we are having. And IMF is making use of our data, making forecasting, not only IMF, and others are also doing. Yeah. One thing I must add, and then maybe that asking since it's actually inside we are actually discussing this, so it's something I'm kind of bringing this example, that if you look at the Islam religion versus Hindu religion, and you will see that Hindu religion scholar ask their own questions that is it true? Even they criticize their own religion. So here actually we are here, although we are statistician and we are from this ISI and NSO, so it's our own. So what actually I'm trying to that whatever we are doing, just ask yourself that how much honesty we are putting here, okay? And that's the thing. It's basically criticizing ourselves that do we live up to our expectation? That is my actual question. It's not to criticize government. We are it's not to criticize any people. We are not here to criticize government. We are talking about data, and we are having a rich history of collecting data. ISI was born out of this movement. Okay, and that is it. But what about your green GDP concept? That's again. I was talking to we had a lot many discussion. In fact, a few weeks back, we talked to Tulsi Dewari also gave one talk. I invited him to give a talk in ISI.
So we had a discussion, and this project we are supposed to actually think about. We are supposed to discuss with mostly if our this project is fruitful, means if it gets fruitful. So it is actually the good part of GDP versus bad part. Absolutely. Of GDP. So that actually, for example, that there are different, different indices, right? That happy indices or something like that. So it was mentioned that if you buy too much medicines and as a result, that consumption figure reflected into your GDP. So that's called bad GDP. But if you actually, produce something like an agricultural products or actually do this farming or something like that, that's actually If you consume more so, liquor. Yeah, more liquor, right? And as a result, tax you, you have lots of tax. So your GDP gets reflected. Yeah, for example, in case of West Bengal, happily the Chief Minister Mamata Banerjee, we have this much tax generated from selling the liquid. So why not? In fact, we have invited Tulsi to talk on this Subla board. Yeah. Yeah. That's actually, and that's maybe actually for the professor. Yeah, we are in a discussion, but we have a limited time, and that's why. It's a very good actually. It's really good to see that you should ask. For example, I criticize ourselves, and you raise this question, and it's actually good highlights that I will actually think that how should we put it, especially in terms of this data quality. Okay. So thank you. Thank you so much. Next presenter Dr. Subhashri Kar, and she will be presenting on designing thinking for rural entrepreneurship. Subhashri, are you there? Yes. Yes. Unmute your mic. You're not audible. Yes. Am I audible? Am I audible? Check your mic. Hello, ma'am. Already it is on my. Hello. Ma'am, you are not audible. My mic is on. Ma'am, kindly unmute yourself. Hello. Hello. It's not muted. It is. 1 minute. It's working. Now it's Ma'am, working. kindly wait. You are not audible here. No, more audio on ଅଛି, more video भी on ଅଛି, audio भी on ଅଛି. କାହିଁକି ଆସୁନି ଆପଣଙ୍କ side ରୁ ଦେଖନ୍ତୁ. विकास ओके? विकास? Yes. आप ओके बोलने के बाद हम ओके बोलेंगे. Yes, am I audible? It's working. It's working. No, ma'am. That's great. You kindly speak something so that we can check the audio. Yes, I am able to listen all of you. Still, you are not audible here. So just kindly wait, ma'am. Okay, let me just again. Yeah, ma'am, you are audible. You are audible. Yeah, yes, ma'am. You can proceed for the presentation. Next presentation.
Yeah, it's visible now. You have only 15 minutes, ma'am. So we are running out of time. So point of within the 15 minutes. So one more presentation we have also after yours. Okay.
So thank you very much. So anyone have any questions? The floor is open now. Any doubt, suggestion, comments? There is no question. Proceed for the next speaker, which will be Roman Sarjan. Okay. So thank you, Dr. Subhashikar. It's a wonderful presentation. I must appreciate your presentation, and it's a new idea and a new type of the presentation. I find that, but that we need to think fast to if you are having the ideas of rural entrepreneurship. So all the thinking and ideas may not be materialized, but as you discussed yesterday, so all those ideas may not be materialized because of the various constraints we have. This presentation give a platform how we can materialize that our design thinking for the on the perspective of that the rural entrepreneurship. And congratulations for this presentation, madam. Thank you. So we proceed to that the next presentation is by this one Surendra Prasad Kushwa. Yes. So his title of his presentation is Bridging the Last Mile, an evaluation of the entrepreneurship ecosystem in rural Jharkhand between subsistence and sustainability. सुरेंद्र नेशनल रूरल एंटरप्रेन्योरशिप हाँ सुरेंद्र कहाँ रख दिया ये वाला हाँ ब्रिजिंग द हाँ People are comfortable with my Hindi. It is in English. I will deliver my talk in English. So, hope you all understand my talk. Bridging the last mile. Rural entrepreneurship in Jharkhand. प्रॉब्लम यही है कि इंटरप्रेन्योरशिप है ट्रेडिशनली, मैं बताता हूँ कि ट्रेडिशनली झारखंड के लोगों में जो इंटरप्रेन्योरशिप था वो समय के अनुसार थोड़ा कमजोर हो गया या विद द न्यू टेक्नोलॉजी वो एक्सिबिट हो गया। तो वो क्या चीजें हैं जो हमें गैप को काटना है, जो शॉर्टकमिंग्स रह गए उसे ठीक करना है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। An evaluation of the entrepreneurship ecosystem in rural Jharkhand, focusing on the transition from subsistence to sustainability. एक ओवरव्यू देना चाहते हैं कि झारखंड इकोनॉमिक पैराडॉक्स, ये हम लोग सभी जानते हैं कि झारखंड पोजेस 40% ऑफ इंडियन मिनरल वेल्थ। इसको एक हिंदी में हम लोग कहावत बोलते हैं, पानी बीच मीन की आसी। पानी में है मछली की आसी है। उसी तरह की कुछ बातें हैं झारखंड के लोगों का कि सभी बोलते हैं कि रिच मिनरल रिसोर्सेस है, बहुत अच्छा क्लाइमेट है और फॉरेस्ट रिजर्व बहुत अच्छा है, सभी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ के लोग सफरर हैं, गरीब हैं। हम कभी और बात कर सकते हैं कि अगर ये मिनरल्स की वजह से रिच मिनरल, हम कहेंगे कि ये बांटी नहीं, ये क्रश हो गया यहाँ के लोगों के लिए, कि जहाँ जहाँ माइनिंग है, जहाँ भी माइनिंग है झारखंड में,
या मैं कहूँगा कि विश्व में कहीं भी आप जाके देखेंगे माइनिंग एरिया के लोकल पीपल सफरर ही हुए हैं। वो जो उनका ट्रेडिशनल लाइवलीहुड सिस्टम था वो डिस्टॉर्ट हो गया और बहुत सारी बीमारियों को लेके आ गए वो लोग। क्लाइमेट जो टेम्परेचर है जो अच्छा था वो रेज हो गया। एक फिजिसिस्ट जो केमिकल फिजिसिस्ट हैं उन्होंने बताया, वो एक बड़ा अच्छा दिखा रहे थे कि किस तरह से डस्ट पॉल्यूशन की वजह से एवरेज टेम्परेचर हाई हो जाता है। वहाँ इंडस्ट्री नहीं है, सिर्फ एक्सकेवेशन है, उसके बावजूद भी टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो वो उसका कुछ रिएक्शन है, केमिकल है या कुछ इस तरह की बातें हैं, वो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये बातें हैं और वहाँ के लोग वो मजदूर होकर रह जाते हैं। तो ये मैं बोलूँगा कि अच्छा लगता है देख करके कि बड़े मिनरल रिसोर्सेज हैं हमारे यहाँ। लेकिन मैं अभी बात करूँगा कि इस तरह की बातें हैं कि जो हमारा सिस्टम है, हम अभी आएंगे पाथ टू सस्टेनेबिलिटी। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, जो हमारे इंडिजिनस नॉलेज है या इंडिजिनस जो सिस्टम है लाइवलीहुड का, उसमें गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो। 2023 का एमएसएमई का झारखंड गवर्नमेंट का इंसेंटिव है कैपिटल इन्वेस्टमेंट का सब्सिडीज देना, इंटरेस्ट सबवेंशन, क्वालिटी सर्टिफिकेशन पे असिस्टेंस देना। ये सारी बातें हैं, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। एग्जम्पशन फ्रॉम इंस्पेक्शन एंड परमिशन वो भी है। उसके बावजूद भी हम नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। और फिर हम की थिंग पे आते हैं, एनटीएफपी, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट वैल्यू चेन। अभी मैंने कहा कि झारखंड में फॉरेस्ट का परसेंटेज ठीक है, अच्छा है, यहाँ वेजिटेशन भी है, कई तरह के पेड़ पाए जाते हैं हमारे जंगलों में। और वो हमारे यहाँ फॉरेस्ट सब्सिस्टेंस कम्युनिटी भी है जो फॉरेस्ट के ही प्रोडक्ट पर उनका जीवन है। ऐसे लोग हैं, ट्राइबल कम्युनिटी है जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट पर ही उनका सब कुछ निर्भर करता है। तो उसमें जो चीजें हैं उसको हम कैसे और चैनलाइज कर सकते हैं, मॉडर्न टाइम का जो सिस्टम है उस पे हम ला करके उनके इनकम्स को कैसे बढ़ा सकते हैं या बढ़ाने के लिए योगदान कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट में जो झारखंड की जो विशेषता है उसमें हम लोग कौन कौन सा चीज जानते हैं, लैक्स, लाख, महुआ, टैमरिंड, इमली, तेंदू लीव्स, हाँ उसका फ्रूट है, बैम्बू, सब मेडिसिनल प्लांट्स, फिर करंज का सीड्स, पता नहीं अंग्रेजी में क्या बोलते हैं करंज को, लेकिन मैं समझता हूँ कि सभी लोग समझते होंगे। वो जो लोकल लोग दातुन करते हैं, बेस्ट दातुन है करंज का। वैसे मैंने पाया कि वो जो दातुन जो करते हैं वो सबसे अच्छा दातुन है बबूल, वेरी गुड ब्रश। उसके सेकंड नंबर पे मैंने वो दिया है करंज को। तो करंज का सीड्स जो है उसके बड़े वैल्यू है, उसके बड़े यूसेज है। करंज, नीम और करंज डिफरेंट है सर। करंज अलग है, नीम अलग है। हम लोगों के इधर नीम का जो बीज होता है, हाँ, उसका भी मेडिसिनल बहुत सारा एक्चुअली वो नीम सीड्स इज अ वेरी गुड एंटीबायोटिक। और आपका दातुन बताया, तो दातुन भी हम लोग नीम का दातुन करते हैं, लेकिन आप ब्रश करेंगे तो उसका जो ब्रश होता है नीम से बेहतर ब्रश करंज का है, और बबूल तो सबसे अच्छा है।
लेकिन करंट का पेड़ कम पे जा रहा है जंगल में। हाँ कम रहा है। तो नहीं, हम उसको प्लांट कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, उसका ये कर सकते, उसके सीड्स का मेडिसिनल वैल्यू है। उसका तेल निकालना है। यस, तेल बोला जाता है। वही मैं अपने सर्वे में अपने ये में पाया कि ग्रामीण लोग वो उसको कलेक्ट करते हैं और मिडिलमैन को बेच देते हैं। मिडिलमैन कहाँ कहाँ ले जाता है उसे उनको नहीं मालूम। तो वो अभी उसमें आजकल मेडिसिन बनता है करंट का तेल में। हाँ, मेडिसिन करंज तेल का मेडिसिन बनता है। इवन नीम तेल, करंज तेल इज बीइंग यूज्ड एज ए पेस्टिसाइड्स वो फार्मिंग में। जो उसका ये बना जाता है, कंपोस्ट बना जाता है। हाँ, नीम और करंज का ये बना जाता है जो खेती में दिया जाता है। हाँ, पेस्टिसाइड से स्प्रे करते हैं उसको, वो पेस्ट कंट्रोल के रूप में उसका इस्तेमाल होता है। वो बातें हैं। फिर नॉन टिम्बर प्रोडक्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट का एक वो साल ट्री का पत्ता और एक और पत्ता है जिसको लोकल पता नहीं आप लोग समझ नहीं पाएंगे, एक मोहलांग पहले कहते हैं लोकल स्लैंग्स में, मोहलांग का पत्ता। उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं मैं सर्च कर रहा था, मैं नहीं पाया। लेकिन आप कचनार का पेड़ देखे होंगे, कचनार, कोनार, कचनार, तो उसका पत्ता को अगर आप ध्यान में देख पा रहे हैं, उसका बड़ा फॉर्म में देखेंगे तो वो पत्ता है वही, जिसके ट्रेडिशनली यहाँ पे वो लीफ प्लेट बनते हैं। वो पब्लिक फीस्ट में जो घर का फीस्ट होता है शादी विवाह में या कुछ करके, तो उस पत्ते का प्लेट यूज किया जाता था। बहुत अच्छा प्लेट बनता है उसका, वो फॉरेस्ट फ्री, उसमें दाल नहीं गिरेगा और इस तरह की बातें हैं। वो चीजें, वो आपका राइट कहना है कि वो चीजें अब कम हो रही है। वो ट्री नहीं है, वो हर्ब है, वो झाड़ी जैसा चीज होता है। पहले बहुत हुआ करते थे जंगलों में, जंगल कट गए, उसका एक अलग स्टोरी है। जंगल में पेड़ कम हो गए, पहाड़ों पे पेड़ कम हो गए, वो लोकल लोगों की वजह से नहीं, ये गवर्नमेंट के स्कीम्स की वजह से खत्म हो गए। गवर्नमेंट ने पेड़ों को कटवाया, लोगों के यूज करने से खत्म हुआ है ऐसा नहीं है, एक वो अलग कहानी है। तो इन सब चीजों को जो प्लेट्स बनते हैं और ये सब चीजें हैं, ये नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट के रूप में आते हैं। और मजेदार बात है ये कि जो अभी सर बता रहे थे कि बिरहोर ट्राइब्स जो हैं, वो मैंने कहा कि वो एंटरप्रेन्योरशिप था उनमें। हम लोग अभी जो प्रिमिटिव ट्राइब मानते हैं वो बिरहोर को मानते हैं, लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा, पीवीटीजी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उनके पास ये आइडिया था कि फॉरेस्ट के चीजों से, जैसे साल ट्री जिसको लोकली सखुआ बोलते हैं, सखुआ के वो स्किन में से उसका एक रेशा निकलता है अंदर से, और उसके रस्सी बनते थे, और वो गांव में नियर बाई विलेजेस में जाके बेचते थे। बार्टर सिस्टम में उसके बदले में चावल ले लिया या दाल ले लिया, धान ले लिया, सब्जी ले लिया, ऐसा भी बेचते थे, पैसे से भी बेचते थे। वो रस्सी बनाते थे, वो अलग अलग यूज के लिए, वो कुआं से पानी भरने के लिए, टू फेच वाटर फ्रॉम वेल, उसका अलग नाम है, लोकल लैंग्वेज में उसको उभन बोलते हैं। जानवरों को बांधने के लिए रस्सी बनता था उसी चीज से, चोक का रस्सी बोलते हैं, शायद दीदी लोग जानती होगी। वो रस्सी को बनाते थे और उसका नाम था लोकल स्लैंग में, इधर कितना लोग जानते होंगे, जोरांडी। वो रस्सी है लेकिन उसका नॉमेनक्लेचर डिफरेंट है, और उस नॉमेनक्लेचर से जान जाएंगे कि दिस रस्सी इज मीन फॉर व्हाट पर्पस। अगर बुलो काट में चीजों को बांधना है तो वही रस्सी, वही सेम आर्टिकल का रस्सी वो बनेगा, और उसका नाम है पगहा। पगहा उड़िया में भी हम बोलते हैं पगहा बोलते हैं, जो काव और भैंस को बांधा जाता है। हाँ, तो पगहा से बांध दिया। तो तड़ियल भी बोलता है, तो अलग अलग जगह में अलग अलग नाम दिए। तो ये इस तरह की बातें हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एंटरप्रेन्योरशिप था, वो बना के बेच रहे थे। अभी क्या हो गया, उसके जगह पे नायलॉन की रस्सी आ गई, प्लास्टिक की।
प्लास्टिक की रस्सी आ गई, वो उनका जो ट्रेडिशनल नॉलेज था वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो रहा है। पुराने कुछ लोग जानते होंगे, नए पीढ़ी उनमें भी है, वो अब नहीं जानते इस बात को। प्लेट जो है अभी हम लोग यहाँ भी यूज कर रहे हैं, वो पानी पीने के लिए ग्लास का यूज कर रहे हैं। वो प्लास्टिक टिम्बर प्रोडक्ट से गिलास नहीं बन सकता है, वो टेराकोटा का बन सकता है जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो सकता है। टेराकोटा भी डिग्रेड होने में लंबा टाइम लेता है, उसका परेशानी है। अदरवाइज हम लोग जो अभी टाउनशिप में या इवन आजकल गांव में भी जो डेब्रिज दिखते हैं, कूड़ा दिखता है, उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन प्लास्टिक्स का है। अगर प्लास्टिक्स नहीं होते तो वो कूड़ों का पहाड़ शायद नहीं दिखता। तो वो चीजें हैं। हम ये करना चाह रहे हैं कि उनका इनकम भी बढ़े लोगों का इंडिजिनस नॉलेज के साथ, और उसका इस्तेमाल हो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। अभी साहू सर ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाया कि यस, प्रोफेसर Raju Maiti was talking about the GDP contribution of Mumbai city is 20 times of whole Bihar is contributing. ये बड़ी अच्छी बात है। इन्होंने सवाल खड़ा किया कि वो कितना उनका इन्वायरमेंटल डिग्रेड कर रहे हैं, और वो ग्रीन जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट है उस चीज को हम लोग ला सकते हैं। हालांकि ये बड़ा टास्क है, उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है हम आगे बात करेंगे। फिर एक जो जिसके लिए बहुत पैसे नहीं लगते, एक सावे घास है, सवई घास, वो उड़ीसा का मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट प्रोड्यूसर ऑफ सवई घास। उसमें बहुत सारे ये बनता है सर, रस्सी बनते हैं बेसिकली, उससे रस्सी बनता है, डाला बनता है, जुड़ी। और मजेदार बात है कि इसको करने के लिए बहुत इनपुट की आवश्यकता नहीं है। वो बेकार पड़े लैंड में या खेतों के किनारे पे ये उगते हैं, उसमें अगर थोड़ा वाटरिंग किया जाए तो साल भर हो सकता है। ये इन सब चीजों को हम अपने नीड की चीजों को बनवा सकते हैं और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप कर सकते हैं। तो ये सब बातें हैं जिसको हम लोग ये नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट में ये सब चीजें किया जा सकता है। इस जो मेरा प्रेजेंटेशन है उसका ऑब्जेक्टिव है कि ये सब चीजें में जो गैप है, जो जैसे अभी हमने बात किया कि महुआ और तमाम चीजें हैं, उस महुआ के चीजों को अगर आप देखेंगे, ये रूरल झारखंड के लिए महुआ एक अच्छा अर्निंग का स्रोत है, अच्छा कैश मिलता है, उसकी कीमतें अच्छी है। बट वेरी सैड कि इसका अगर लीकर प्रोडक्शन बंद कर दिया जाए तो इसकी कीमतें गिर जाएगी। क्या ये सच है? तो ये हम क्या करेंगे? अभी हम बता रहे हैं कि ठीक है, कंजम्पशन ऑफ लीकर हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन ये बैड जीडीपी होगी, तो ये हमारा रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देगा। तो क्या हम रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए मेकिंग ऑफ लीकर आउट ऑफ महुआ, हम इसको प्रमोट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ये गलत है। वो गाँव में जो बुजिंग हैबिट है लोगों का, उससे जिंदगियां खराब हो रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम हो रहा है। आप सर्वे करके देखें, मेरा एक है वो हमने देखा है कि बहुत यंग एज में लोग मर रहे हैं। वो क्यों मर रहे हैं? झारखंड में स्पेसिफिक यही की बात मैं कर रहा हूँ। और वो थोड़ा सा ट्रेडिशन में भी है, उनके कल्चर में भी है कुछ। क्योंकि जब हम अपने कल्चर को लेते हैं तो उसमें जो वर्शिप का जो प्रक्रिया है उसमें उसकी आवश्यकता है, तो हम उसको प्रोहिबिटेड नहीं बना सकते कि जो हम वर्शिप में यूज करते हैं वो प्रोहिबिशन में नहीं हो सकता है। वो अलग समस्या है कि उसको कैसे ब्रेक करेंगे वो सिस्टम। हम अपने रिचुअल्स में अगर वो महुआ का लीकर यूज करते हैं तो उसको हम प्रोहिबिशन में नहीं ला सकते, उसको हम नहीं कर सकते कि ये खराब चीजें हैं। वो अलग तरह की समस्या तो है उसमें। तो वो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव है हमारा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग
कि क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकते हैं। एंटरप्राइज डिस्टिंक्शन, distinguish between subsistence growth oriented enterprise और identifying barriers to growth। ये चीजें जानना है कि आखिर ये चीजें क्यों नहीं हो पा रही, उसको जानने का है। और उसके लिए वो evaluate the effectiveness of the proposed hub and spoke incubation model in the state startup policy 2024। ये स्टार्टअप पॉलिसी जो अभी आया है उसके बारे में हम पैसा दे देंगे। फाइनेंस की भी समस्या है, लेकिन अगर सिर्फ फाइनेंस हम कर देंगे तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा ऐसा आवश्यक नहीं है। अभी सुभाश्री मैडम ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया कि वो डिजाइन थिंकिंग ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। हम रूरल एंटरप्राइजेज में ये डिजाइन थिंकिंग को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं कि कैसे चीज हो जाए। हम महुआ का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं वो डिजाइन थिंकिंग बताए करना होगा कि वो महुआ हमारे डेली यूज में आ जाए, जो लीकर से अलग हट करके हो, और वो हमारे रूरल लोगों पे इनकम एनहांसमेंट का जरिया बन जाए। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे। मेथोलॉजी हमने लिया है, वो रांची, ईस्ट सिंहभूम और दुमका की जगहों को जा करके देखा है। कुछ अपने, क्योंकि मैं हजारीबाग का हूँ तो हजारीबाग के जगहों को मैंने देखा है और इनसे चीजों को पाने की कोशिश की है। ये इम्पोर्टेंट चीज है। एजनबर्ग डोमेन में जो चीजें हैं किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप को फ्लोरिश करने के लिए, ये 6 चीजों को बताया गया है कि सबसे पहले तो पॉलिसी होनी चाहिए, फाइनेंस, कल्चर, मार्केट, सपोर्ट सिस्टम एंड ह्यूमन कैपिटल। मार्केट बाद में है लेकिन वो पहले है। तो ये सब चीजें हैं जिसको हम देखना, ये इसी एंगल में बात करना चाहेंगे। फाइंडिंग्स, डिजिटल 5 मिनट से ओ अभी और एक सेशन शुरू करना है। तो मैं बताना चाह रहा था कुछ, एक सेकेंड, मैं रिकमेंडेशन पे आ जाता हूँ। रिकमेंडेशन, establish rural growth accelerator to provide high touch mentorship, prioritize market access और move away from exclusion and simple initiation to rival scale। ये रिकमेंडेशन है और उसको मैं एक ही साथ बताता हूँ। सबसिस्टेंस ट्रैप जो है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा कि सबसिस्टेंस ट्रैप वो मेंटल चीजों को भी बदलने की आवश्यकता है कि कैसे एंटरप्रेन्योरशिप हमारे यहाँ जो बोलता है कि 50% लेबर फोर्स हम सिंगल क्रॉप रेन फेड फार्मिंग है। ट्रेडिशनली अगर जाएंगे आप तो एग्रीकल्चर कॉमर्शियल नहीं रहा है, अब ये चेंजेस आ रहे हैं। दुबे सर मेरी बातों को सपोर्ट कर पाएंगे। पुराने समय में एग्रीकल्चर करते थे और उसको तब तक नहीं बेचेंगे तब तक जब तक कि अगला हार्वेस्ट ना हो जाए, क्योंकि वो सबसे पहले सर्वाइवल की समस्या है। हमारा पूरे साल भर का खाने की समस्या ना हो। रेन फेड एग्रीकल्चर है बेसिकली, तो रेन फेड एग्रीकल्चर में इस साल बम्पर क्रॉप हो गया, अगले साल फेल हो जाएगा। तो हम इस एंटीसिपेशन में कि अगले साल हम कर लेंगे, अगर इसको सारा का सारा सेल आउट कर दिए तो हम नेक्स्ट ईयर क्या खाएंगे इसकी चिंता रहती थी। अब इन सब चीजों को विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन हम कर पा रहे हैं। एक झारखंड के लिए बड़ा अलार्मिंग चीज है इरिगेशन जिस तरह से हम कर रहे हैं डिप बोरवेल करके। एक तो पठारी इलाका है यहाँ पे, तो नेचुरल वो कैनाल सिस्टम और वगैरह वगैरह कम डेवलप हुआ है। हो सकता है अभी नेचुरल फ्लो इरिगेशन और कुछ चीजें हो सकता है, क्योंकि पहाड़ पे पानी अभी भी आता है। वो उन सब चीजों को डेवलप करने की जरूरत है। लेकिन ये
हमारा अल्टीमेटली वो इरिगेशन जिस तरह से हम डीप बोर कर रहे हैं, वो डीप बोर करने से वो वाटर लेवल है वो चला जाएगा। मेरे पास एक एग्जांपल है, हरियाणा का महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट था जिसका मैं हिस्सा था, और उसमें मैंने देखा कि वहाँ पे लोग जो हैं, मैं पहले जब गया तो बड़ा खुश हुआ कि भाई ये गांव इतना डेवलप है कि गवर्नमेंट ने इतना काम किया कि ये सेंट्रली वाटर सप्लाई सिस्टम है। मैं देख के बड़ा खुश हुआ, लेकिन जब मैं बात किया लोगों से तो पता चला कि यहाँ पे ग्राउंड वाटर है ही नहीं, पानी पीने का नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने लगभग 200 किलोमीटर से वाटर को चैनलाइज करके घर घर में सप्लाई कर रहा है। तो मैं जिसको विकास मान रहा था, एक्चुअली वो विनाश का परिणाम था। तो वो चीजें यहाँ भी हो सकती है। अभी लोगों को काफी अच्छा लग रहा है, डीप बोर करते हैं, इरिगेशन कर रहे हैं और तमाम चीजें कर रहे हैं। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का एक और बात है, मुझे कैसे ये मालूम पड़ा कि जिस घर में मैं जा रहा था हाउस होल्ड सर्वे के लिए, या तो बूढ़े लोग मिलते थे या महिलाएं मिलती थी, यंग लोग नहीं थे। तो मैंने कहा कि ऐसा क्यों है भाई? बोले कि कमाने खाने का यहाँ नहीं है, सब बाहर जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब खेती हो नहीं सकती। बरसात में थोड़ी खेती हो जाती है, बाकी समय में नहीं हो पाती है क्योंकि पानी नहीं है। तो ये एक समस्या है। रिकमेंडेशन में आना चाह रहा था। स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन में यस, ये रिकमेंडेशन में मेरा ये है कि अगर जो नॉलेज है, इंडिजिनस नॉलेज है, उसको टेक्निकल ब्लेंड के साथ करना होगा। अगर हम आज भी, जैसे मैंने कहा कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट में पत्तल इंडस्ट्री का बहुत स्कोप हो सकता है। पत्तल बनाने वाली चीजों को, वो एक तो बायोडिग्रेडेबल है, वो हाइजीनिक है, हेल्दी भी है। हम प्लास्टिक लेयर प्लेट पे लोगों को न खिलाएं मांस में, उसका नुकसान ना हो, दोनों बातें हो सकती हैं। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि ट्रेडिशनल जैसा वो बांस के सीख से अगर वो पत्तल बनाते रहेंगे तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात कि जब हम उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, रियल टाइम पे कंजम्पशन हो जाएगा तब तो ठीक है ताजे पत्तों का, लेकिन वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिहाज में वो जो डिजाइन थिंकिंग वाली बात है, उसको हमें लंबे समय तक यूजेबल बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी का ब्लेंड करना पड़ेगा। ये मेंटरशिप का जो है बातें वो लाना पड़ेगा। ये है। फिर एक और हम कहेंगे कि जो महुआ की बात कर रहे हैं, उसका फल का तेल अभी हम लोग बात कर रहे हैं। न्यू फाइंडिंग्स बताते हैं कि महुआ का तेल एडिबल ऑयल है। पहले भी लोग खाते थे, लेकिन लोग बात कहते थे क्या कि बेचारा गरीब है, महुआ का तेल खाता है, जिसको गांव में बोलते डोरी का तेल खाता है, गरीब लोग खाते हैं। उसी तरह से फ्लैक्सीड ऑयल गरीब लोग खाते थे, बोलते थे कि गरीब है, फ्लैक्सीड ऑयल खाता है। लेकिन आज चीजें बदल गई। रिसर्चर्स बता रहे हैं कि वो लो कोलेस्ट्रॉल वाला तेल है, वो बेहतर है। उसी तरह से महुआ का तेल भी बेहतर है, वो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसको हमें चैनलाइज करना है। मार्केटिंग की समस्या है, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के बढ़ोतरी के लिए ये टेक्नोलॉजी और वो महुआ का तेल का निकालने का प्रोसेस मैंने जाके देखा है। वो बहुत पुराने तरीके से उसको उबाल करके लकड़ी में दबा के निकालते थे पहले, अब नहीं निकाल रहे हैं। ये बहुत पुरानी बात मैं बता रहा हूँ, कम से कम 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अब क्या है, वो मिल में निकालते हैं, अपनी मिल में उसको निकालने लगे हैं। तो ये अच्छी बात है। हम उसको प्रॉफिटेबल बनाएंगे विद द ब्लेंड ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सब बातें हैं, उसको नई चीजों में लाना पड़ेगा। दूसरी बात, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अभी रिसर्चेज बता दिया कि फ्लैक्सीड ऑयल हार्ट के लिए अच्छा है। फ्लैक्सीड का हस्क, उसके भूसा, उसका खाने से अच्छा है। वो
इधर जो ईस्टर्न इंडिया का रीजन है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वगैरह वगैरह, वो पठान खाने का चीज है, उसने फ्लैक्सीड का फर्स्ट मिला दिया। वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, तो उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट होने चाहिए, रिसर्चेज होने चाहिए और होने चाहिए, और जो रिसर्चेज हो गए हैं उसको फ्लोरिश करने की आवश्यकता है, ये बताने की आवश्यकता है। और जो लोग कर रहे हैं, जो कलेक्ट कर रहे हैं, खासकर जो जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ द वीमेन है, महिलाएं वो कलेक्ट करती हैं। और वो करती क्या है, वो सिंपली बेच दिया। अगर उसको हम प्रोसेस करें, उसमें वैल्यू एडिशन करें थ्रू द डिफरेंट चैन, उसको हम वैल्यू एडिशन करेंगे, तो जो हम जिससे उसकी आमदनी कम कर पा रहे हैं, उसकी आमदनी हमारी बढ़ सकती है, और वो हमारा इंडिया, हमारा झारखंड प्रॉस्परस हो सकता है। सर ने बहुत अच्छा बात बताया झारखंड बारे में, ये सब सारी चीज होना चाहिए, ये सब ग्रासरूट लेवल का चीज है, हम उसमें से ही बढ़ के आए हैं। लेकिन आज इतना टेक्नोलॉजी हो गया, एडवांस हो गया, हम लोग वो सारी चीज भूलते जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे स्कोप है, बहुत सारी चीज को भी सीखने के लिए और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए, कि झारखंड हो, उड़ीसा हो, कि छत्तीसगढ़ हो, कि बिहार हो। सर मैं एक चीज और बताना चाह रहा था, वो जो ब्लेंड ऑफ टेक्नोलॉजी है ना, ये मेंटरशिप में ये गवर्नमेंट को इनिशिएशन लेना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का इनिशिएशन नहीं था, गवर्नमेंट है। 1979 में एक योजना आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, ट्राइसेन, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट पुराना है, नई बात नहीं है। ये ट्राइसेम उस समय था, और मेरे पास लाइव एग्जांपल्स हैं कि उस ट्राइसेम योजना से वो ट्रेनिंग करके लोग एंटरप्रेन्योरशिप वो किए हैं। टेलर जो बने हैं, टेलरिंग, टीवी रेडियो मैकेनिक, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, ये सब तमाम एरिया थे, उसका इंसेंटिव करते थे। वो ट्रेनिंग था, 300 रुपीज पर मंथ स्टाइपेंड मिलते थे, कि जो 18 ईयर टू 35 ईयर एज ग्रुप के लोग थे, उनको रजिस्टर करते थे ट्रेनिंग में, और जो लोग ट्रेनिंग करेंगे उनको 300 रुपये एवरी मंथ स्टाइपेंड भी मिलेगा। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग वो चैनलाइज करते थे कि उनको सब्सिडाइज रेट पे लोन भी मिल जाए। और ऐसे कई एग्जांपल हैं जो आज वेल सेटल्ड बिजनेसमैन है और एंटरप्रेन्योर है, डेयरी मिल्किंग में, पोल्ट्री फार्मिंग में, और इवन ये इसमें मैंने क्या कहा, रेडियो मैकेनिक और वगैरह, टेलीविजन मैकेनिक में, ये लोगों ने अच्छा काम किया है। अगर इस चीजों को बाद में इसको डिवेलप कर दिया, वो स्वर्ण जयंती ग्राम विकास योजना में मर्ज कर दिया, अभी उसको करके जो हम इन सब चीजों की बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप का, उसमें हम अगर ट्रेनिंग दे दें तो कुछ हमारी चीजें बढ़ सकती है। धन्यवाद। Presentation in this session, starting from Dr. Raju Maiti. He talked about this mentor goat farming in West Bengal. And second presentation was very interesting, that the design thinking for rural entrepreneurship by Dr. Subhasri Kar. And she has a very given that very good idea about that, how you think about that, the new entrepreneurship in context of rural entrepreneurship. Then finally, coming to our Jharkhand issue, that Dr. Surendra Prasad Kushwaha पूरा ग्रासरूट लेवल में बात किया है, कैसे चल रहा है, महुआ हो कि साल पत्ता हो कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हो, इसको कैसे लेके हम आगे बढ़ सकते, रूरल एंटरप्रेन्योर्स को बड़ा कर सकते और मार्केटेबल कर सकते, उसका बारे में अच्छा बताया। और थैंक यू वन एंड ऑल द पेपर प्रेजेंटेटर। सो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, ठीक है, वैसे आगे पीछे चलता रहता है। सो थैंक यू। So we will meet after 10 minutes break. व्हाट्सएप कर दीजिए सर का, आपके पेन ड्राइव में नहीं, व्हाट्सएप पे ही है, तो आप नंबर बताइए फिर मैं फॉरवर्ड कर दूँ। 62 014
90985. पीछे बैठा है सर का इनका पीपीटी मिल सकता है इनका जो प्रेजेंट किया ओ किसको सर नहीं ऑफ नहीं हुआ सर इसको शेयर कर देंगे शेयर कर कर देंगे देंगे सब हो जाएगा वो change in the session. So there is a little change in the session. So instead of अरे यार, Dr. कहाँ चला गया यार? Dr. Radhu Mehta, माउस कहाँ so चला गया? हाँ, Amyok ये। Kumar Das will be there. दो स्क्रीन में है। You've probably heard of contracts. They're pretty common in everyday life. But why do we need these contracts? What do they do? Contracts are written agreements between two or more people or groups. They help us define clear expectations about the agreement and what will happen if anyone breaks the agreement. Contracts are like a source of truth that anyone can go back and look at to understand what
सारेगामा कार तूने पर्दा उठाया Permissioned blockchain networks that require every peer to execute every transaction, maintain a ledger, and run consensus can't scale very well. And they can't support true private transactions and confidential contracts. So the Hyperledger community designed Fabric V1 to deliver a truly modular, scalable, and secure foundation for industrial blockchain solutions. The most notable change is that peers are now
You've probably heard of contracts. They're pretty common in everyday life. But why do we need these contracts? What do they do? Contracts are written agreements between two or more people or groups. They help us define clear expectations about the agreement and what will happen if anyone breaks the agreement. Contracts are like a source of truth that anyone can go back and look at to understand what each person agreed to. For example, let's say you want to build a pool in your backyard. You can't build the pool yourself, so you need to hire somebody. You've heard that Maria is really good at building pools, so you tell her you'll pay her $100 to build one in your yard. She agrees to help. To formalize this verbal agreement, the two of you decide to write up a contract. The contract writes out the details for what Maria needs to build, what she needs to finish the job, and when, how, and how much you're going to pay her. In short, this contract makes expectations super clear for both you and Maria. In the world of crypto, there are also contracts. They are called smart contracts. Just like the regular contracts we've been talking about, smart contracts lay out the details of an agreement. What makes smart contracts smart is that they are written in code on a blockchain and they automatically action things if the agreement is met. For example, if your agreement with Maria was written as a smart contract, it would automatically transfer $100 from your crypto wallet to her crypto wallet once she completed building the pool in your yard. But if she had built a pyramid instead of the pool, the smart contract would know not to send the money. How cool is that? Smart contracts can be used for many different things in the world of crypto, everything from gaming and finance to logistics and loans. They are opening up new possibilities for how people make agreements and do business with one another. Permissioned blockchain networks that require every peer to execute every transaction, maintain a ledger, and run consensus can't scale very well. And they can't support true private transactions and confidential contracts. So the Hyperledger community designed Fabric V1 to deliver a truly modular, scalable, and secure foundation for industrial blockchain solutions. The most notable change is that peers are now decoupled into two separate runtimes with three distinct roles: endorser, committer, and consenter. Here's how it works. Say you run an organic market in California, and I grow radishes on my farm in Chile. You and I are on a blockchain network that supports transactions between various markets, growers, shippers, banks, and others. Say I agree to sell you my radishes at a special low price, but I need the other markets that buy from me to continue buying at the standard price. They shouldn't be able to execute our confidential agreement and find out the details of our deal. In fact, if they aren't part of the deal, the transaction shouldn't appear on their ledger. Fabric V1 handles all this. My app looks up your identity from a membership service and then sends the transactions only to our peers. Both of our peers will generate a result. In this two-party agreement, the transaction requires both of us to render the same result. But in transactions with more parties, other rules can apply. Then the peers send the validated transaction back to the application, which sends it to a consensus cloud for ordering. And then the ordered transactions are sent back to the peers and committed to the ledger. But to get my radishes to your market, there are many other parties involved. Some need to know that my radishes have been verified and checked into a shipping container. Others need to handle bills of lading, customs inspections, financing, insurance, but most of these parties don't need to know about our special price.
Now think about our transaction running on a network handling all the markets, all the farms, shippers, facilitators, the whole supply chain. This is the same pattern needed by many industries. Anywhere we need to manage confidential obligations to each other without passing everything through a central authority.
Now you speak. Mr. Shumit Kumar, kindly unmute yourself. Mr. Shumit Kumar, are you there? Yeah. Yeah, you are audible. So kindly start. Yes. The next level of growth.
Excuse me. हेलो अच्छा म्यूट कीजिए तभी तो फ्लैट है। सुमित कुमार जी आप हिंदी में अगर थोड़ा बहुत बोल सकते हैं तो पार्टिसिपेंट्स के लिए बेहतर होगा क्योंकि ज़्यादातर पार्टिसिपेंट हमारे रूरल एरिया से हैं। तो आपका पूरा जो कंपनी है वो रूरल आदमियों के लिए ही है, किसानों के लिए। व्हाट्सएप
queries about the company, about the support. कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग भी अगर कुछ पूछना चाहेंगे तो सीख सकते हैं आप लोग हिंदी में पूछ सकते हैं आप लोग जैसे करते हो आप लोगों को सारा सपोर्ट देने के लिए ये कंपनी है तो अगर कुछ पूछना हो ये सपोर्ट हमको कैसे मिलेगा तो आप पूछ सकते हैं खासकर मछली पालन के क्षेत्र में Thank you very much, Mr. Sumit Kumar. It was a pleasure listening to your talk. In fact, this is a workshop, workshop from Sumit. So this presentation and also Sishanu's presentations, in fact, it was really commendable because they entirely solve the purpose of the workshop. Most importantly, I would request all of them, most of the participants, if they speak in Hindi, we have also rural participants, people from villages and all. There are self-help group members and also we have APO members. So communicating in Hindi will rather have a great impact on them also. They can effectively communicate with us. मैं खुद इंग्लिश में बोल रहा हूँ बट फिर भी मैंने जितना कोशिश करेगा अगर हिंदी में बोले तो उन लोगों के लिए एक्चुअली सुविधा होगा और ये अच्छा लगा कि आपका जो प्रैक्टिकल मॉडल था वो मुझे लगता है कि सेल्फ ग्रुप मेंबर्स और एपीओ मेंबर्स जो लोग हमारे पास है उन लोगों को ज़्यादा फायदेमंद होगा कुछ भी अगर प्रैक्टिकल कुछ प्रॉब्लम्स है आप इम्प्लीमेंट करने में अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप इनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो या और भी सेक्शन जो है जैसे कि आपको कुछ एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे उसका कंप्यूटर में कैसे एप्लीकेशन करेंगे मशीन लर्निंग का कैसे एप्लीकेशन नया नया टेक्नोलॉजी जो आ रहा है आजकल तो हम लोग का यहाँ पे भी है रिसोर्स पर्सन सो आप लोग हेल्प कर सकते हैं हमारा मतलब नहीं है कि सिर्फ थ्योरी यहाँ पे और सेमिनार करते रहे बट इसका मतलब है कि आप लोग को सुविधा किस तरह हम लोग पहुँचाएं हमारे तरफ से कि क्या इनपुट्स जैसे कि टेक्नोलॉजी नॉलेज के हिसाब से आप किस तरह इनपुट्स ले सकते हो ये होना चाहिए कि थोड़ा इंटरैक्टिव मोड में होने से ज्यादा असर आएगा ठीक है थैंक यू वेरी मच विल सी यू अगेन we'll have a break for the launch now I think Keshav we have the launch break now. Yes okay thank you
Shall we start? I think you have taken light loads. And if it's a heavy, then the God of sleep will arrive here. Okay, so we are, I think, 2-4. How many papers? So 2 to 2:30, Sri Tulsi Tiwari, he will start the talk, right? He's around? Oh, he's online. Okay. So am I audible? Sri Tulsi Tiwari? Okay. So I would like to invite you to present your paper or read the talk. You can start. It's over to you, sir. Tulsi, sir? Okay, please go ahead. And the stipulated time for you is 30 minutes, and it is wrongly written 2:15. So, yeah, 30 minutes. So you can keep your talk within 30 minutes. Thank you very much. It's over to you. क्या बोले? थोड़ा बड़ा. सिस्टम का ऑनलाइन they're all concentrated in city areas. And दिस इज ओके ओनली
My model is Yeah, thank you, Tulsi sir. We will show that the video for the one minutes or 2 minutes. Which one you got? Share screen. The new ones. स्क्रीन से क्लिक करो तुमको पता चलेगा कि दिख रहा है वीडियो। while villages for a distance up to 15 to 20 kilometers. Whole country can be redesigned with such an entity, say, sillage, that consists of one city in the center surrounded by 100 to 200 villages. Make border region outside the city as the hub of all major activities such as business, offices, factories, school, colleges, hospitals, etc. The key idea is people from both city and villages can easily reach workplaces within 20 to 30 minutes of low traffic, so faster movements. As a result, villagers continue to live in village homes and can also work near city borders in non-farming jobs. My master plan is to provide every citizen an easy access to village and city life both on daily basis. Today, by concentration of money in cities, talented people from villages are forced to migrate for income to cities. So cities are overpopulated with more than 50% living in unhygienic slums. We are making 30,000 people crushed into 1 square kilometer in metro cities, while only 300 people per square kilometer in villages. That is 90% of India. Imagine India can be redesigned into, say, about 5,000 beautiful villages with 5,000 small cities surrounded by 6,50,000 villages existing in India. INSV Kondinya.
you, Tulsi sir, for a very comprehensive talk on how to, build a decentralized system in Indian context, and which was you mentioned, you quoted from British scholar, and the model is there already. Model was there. Only we have to revisit and re-implement that. So let us see. For now, floor is open for questions, comments, feedback if there is any. You can directly ask. So we are audible, sir. We have some members from FPOs and self help groups also. मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कोई हिंदी में अगर कुछ पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हो ना. हमारा यहाँ पे वो तुलसी कंवर सर जो मुंबई से हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहेंगे तो वहीं पे भी जाके पूछ सकते हो. हम लोग को बातें समझ में नहीं आएगा, पूछेंगे क्या आप समझ सकेंगे ये क्या क्या है वो हम लोग को पूरा समझ में नहीं आया. Okay, now English. Sir, they are requesting you if possible you can summarize something in Hindi so that they can understand and then they. मैंने शुरू से बोला.
जो पूछना चाह रहे हैं उनसे उधर जाके मैं एक दिन पूछ लेते हैं कुछ क्वेश्चन। हाँ, कैपिटल का ये आप उधर जाके पूछिए, वो आंसर दे सकते हैं। हाँ, क्या जैसे कि हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, आपके पास आइडिया है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपको कौन सा फिर प्रॉब्लम क्या होगा, तो वो थोड़ा सा उनसे डिस्कशन कीजिए, वो आपको थोड़ा बताएंगे। ये हम कड़वा जिले से हैं और सर हम ये पूछना चाहते हैं कि जैसे हमारा किसान जो है फसल तो उत्पादन कर लेता है, लेकिन प्रोसेसिंग की बात जब आती है तो वो कहीं न कहीं पीछे हो जाता है प्रोसेसिंग में, और जब मार्केटिंग की बात आती है तो उसमें तो वो बिल्कुल सोच ही नहीं पाता कि हमको मार्केटिंग कैसे करें। तो हम लोग चूँकि हैं मुख्य समस्या तो मार्केटिंग तो मैं थोड़ा सा उनसे सर एक्चुअली सॉरी फॉर द इंटरफेरेंस, मैं इनका एक्चुअली ऑलरेडी एक कंपनी है, वो एक एक्चुअली फार्मर प्रोड्यूसर एक कंपनी खुले हुए हैं ग्वाडुआ। का कहना है कि हमारे पास प्रोडक्शन सफिशिएंट प्रोडक्शन है, सरप्लस है। अभी क्या होता है उनका, जो मेरे को जहाँ तक समझ में आ रहा है, इनके पास वेयर हाउसेस का कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, मार्केट लिंकेज नहीं है, वो मार्केट कैसे डेवलप करेंगे और मार्केट तक कैसे पहुंचेंगे उसके लिए कोई संसाधन नहीं है, वो कैपिटल कहाँ से जनरेट करेंगे, इन लोगों का ये एक्चुअल प्रॉब्लम है।
हम लोग सर छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, गढ़वा जिला का, छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है जी। एक गढ़वा जिला है, रामानुजगंज के सर बगल में है गढ़वा। और वहीं से हम लोग बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमारे कुछ किसान सदस्य जो हैं रामानुजगंज से सर। नहीं, जगदलपुर से किधर है? जगदलपुर से तो दूर हो जाएगा। अंबिकापुर वहां से 130 किलोमीटर है। जी सर, हमारे यहाँ का 50% आबादी वहीं रहता है। एक और चीज कहना था इनका, एक्चुअली अभी हमने प्रेजेंटेशन रखा है, उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। नाउ ही शेयर हिज एक्सपीरियंसेस अबाउट ग्रो एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। तो इनका जब एक्सपीरियंस सुनेंगे आप, थोड़ा सा सर लाइन में रहना। इन्होंने इनका एक्सपीरियंस सुनने के बाद आप थोड़ा अपना फिर इनपुट्स देने से समय भी बचेगा और आपसे बेहतर समझेंगे इनके बाद। आपका जो एक्सपीरियंस है पूरा उसको बताइए। आदरणीय उपस्थित जन, सम्मानित साइंटिस्ट या एंटरप्रेन्योर जो भी हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं गढ़वा जिला से हूँ, जो झारखंड का एक छोटा सा जिला है, लेकिन व्यवसायिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो गढ़वा जिला जो है छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार, ये 3 जिलों से सटा हुआ है, 3 राज्य से, और ये तीनों राज्य की दूरी गढ़वा से 50 किलोमीटर समथिंग है। हमारे यहाँ किसान पूरे वर्ष भर खेती करते हैं। हर एक महीने में रोटेशन के अनुसार कभी सब्जी हो गया, अनाज हो गया, मोटे अनाज हो गया, इस सब का खेती चलते रहता है। हम लोग अभी 2 प्रखंड में ऑर्गेनिक खेती का शुभारंभ किया है इस वर्ष से। हमारे किसान बीज उत्पादन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं, जैसे चना हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया। गढ़वा में 18 ब्लॉक में हम लोग सक्रिय रूप से काम करते हैं, और वहाँ के 10,000 किसान डायरेक्ट रूप में हम लोगों से जुड़े हुए हैं। हम लोग उनके उत्पाद को खरीदते हैं, छोटे स्तर पर अपने गांव में उनका वैल्यू एडिशन करके बेचते भी, बेचवाते भी हैं, जिससे उनको फायदा होता है। हमारे यहाँ धान का बहुत अधिक उत्पादन होता है, लगभग 10,000 क्विंटल से अधिक धान का उत्पादन होता है, और उसका हमारे किसान कोई विकल्प भी नहीं खोज पा रहे हैं, लेकिन उसका रेट उन लोगों को ठीक नहीं मिलता है। अभी गढ़वा में 17 रुपये केजी धान किसान बेच रहे हैं मजबूरी में, लेकिन जो किसान हम लोग से जुड़े हैं उन लोग का धान हम लोग 19 रुपये, 19.5 रुपये तक मिल में भिजवा दे रहे हैं, जिससे उनको कुछ फायदा हो रहा है। झारखंड सरकार भी धान क्रय करती है 24 रुपये 50 पैसे, लेकिन वो बहुत सीमित मात्रा में होता है।
हम लोग मेडिसिनल प्लांट का भी उत्पादन शुरू कर रहे हैं। कुछ अभी 1-2 किसान शुरू किए हैं, लेकिन उनका अभी रिजल्ट सामने आया नहीं है। गढ़वा में प्रोसेसिंग यूनिट की बहुत ही कमी है, क्योंकि एफपीओ उतना कैपेबल नहीं है जिससे वो यूनिट लगा करके उनके उत्पाद को प्रोसेसिंग कर सके। फिर भी हम लोग आपस में मिल करके प्रयास कर रहे हैं। अभी दाल का, तेल का हम लोग प्रोसेसिंग कर रहे हैं जो 100% शुद्ध है, और बाजार रेट से थोड़ा ज्यादा है रेट हम लोग का, थोड़ा सा। गढ़वा में कच्चे माल की उपलब्धता पर्याप्त है। किसान बेस्ट कोई भी उद्योग यदि हम लोग वहाँ स्थापित करते हैं तो उसका रोटेशन वहीं के किसान कच्चे माल के रूप में उसका उपलब्ध करा सकते हैं। कहीं बाहर से हम लोगों को परचेजिंग की जरूरत नहीं है। एक हम लोग और ये इनोवेशन के टाइप पर हम लोग ये प्रारंभ किए हैं, बायोगैस। क्योंकि हर किसान के पास 2-3 पशु होता ही है। हम लोग अभी 10,000 में एक छोटा बायो प्लांट लगा रहे हैं, और किसान उससे अपना जो किचन का काम है वो सुगमता पूर्वक कर रहा है। ये 2 साल से चल रहा है। 1-2 फेल हुआ, लेकिन अभी सारा सक्सेस ही है। और उसमें किसान को जो 1,000 रुपए पर मंथ का जो खर्च आता था वो बच रहा है। किसी किसी का तो ज्यादा भी बच रहा है। और उससे क्या होता है कि जो वेस्ट होता है उसमें हम लोग जो डालते हैं, कचरा निकलता है, फिर उसका हम लोग खाद के रूप में खेत में पुनः बेच भी देते हैं। उससे भी किसान को लाभ हो रहा है। और जो खरीद रहे हैं उनको खाद, वो जो पेस्टिसाइड खरीदते हैं 1800-1700 रुपए बैग, वो उनको 200 रुपए बैग मिल जा रहा है। और उससे जो हमारे किसान उत्पादन करते हैं, यानी कि हम लोग उसको ऑर्गेनिक में यूज करते हैं। तो इस तरह से हमारा एफपीओ, गढ़वा जिला का एफपीओ कार्य कर रहा है। हम लोग अभी प्रयासरत हैं राइस मिल के लिए। यदि वहां लग जाता है तो हमारा किसान जो आज 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर का ट्रांसपोर्टिंग दे रहा है, वो उनका बचेगा, वो उनको फायदा होगा। क्योंकि धान वहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। तो धान तो पूरे झारखंड में होता है, लेकिन गढ़वा का जो एरिया है वो थोड़ा दूसरे टाइप का है। गढ़वा, छत्तीसगढ़, गर्मी में भी धान का उत्पादन होता है। तो इसके अलावा आपका क्या प्रॉब्लम है उसको भी बताएं, समस्या। क्योंकि हम लोग भी एक किसान ही हैं और कोई टेक्निकल जानकारी हम लोग को भी नहीं है। सबसे पहले तो हम लोग को समस्या है टेक्निकल जानकारी की, जो अभी बहुत हम लोग सुन रहे हैं कि डाटा, तो वो डाटा हम लोग को जानकारी चाहिए कि डाटा क्या है, उसको हम यूज कैसे करें, कैलकुलेट कैसे करें, ये सब की जानकारी हम लोगों को होना चाहिए। दूसरी बात है कि फंड की, सरकार भी कहती है कि एफपीओ को 2 करोड़ का लोन कैसे दिया जाएगा, लेकिन जब हम लोग बैंक में जाते हैं तो वहाँ वो सब कुछ नहीं होता। बैंक का अपना एक अलग फंडा हो जाता है कि ये पेपर वो पेपर दो। फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारा एफपीओ, मतलब सारे एफपीओ लगभग आगे बढ़ रहे हैं। और
जब एफपीओ बढ़ रहा है तो किसान भी बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग को कोई भी सर्विस चार्ज किसान से नहीं लेते, जो बेसिकली खर्च आता है वही हम लोग किसान के मतलब जो हम लोग को उत्पाद देता है उसमें केवल खर्च ही ऐड होता है, फायदा उसको जाता है। इसलिए किसान हम लोगों से जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। अभी पिछले मतलब इस वर्ष चना का बीज हमारे किसान 135 रुपए बेचे बाजार में। जो चना किसान बेच रहा था 50 रुपए केजी, वो चना इस बार किसान 135 का बेचा। तो किसान सोच रहा है कि हम अब और ज्यादा खेती करें, तो धीरे धीरे उत्पादन भी बढ़ रहा है। बशर्ते उनको समझाने के लिए टेक्निकल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट ये दोनों चाहिए। हमारा जिला निवेश के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे किसान साझेदार के लिए तत्पर हैं। हमारा एफपीओ मॉडल भी व्यापार के लिए तैयार है और हम सारे लोग ईमानदारी पूर्वक अपने एफपीओ के लिए काम करते हैं, तभी इतने कम समय में एफपीओ इतना एक सम्मानित जगह पे पहुंच गया है कि इस तरह के भी आयोजन में बुलाया गया। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। वर्किंग कैसे है आपका बताइए ना सर, थोड़ा सा इंसाइट मिलेगा कैसे आप करते हैं वर्क। जैसे 10 किसान हैं, हम लोगों ने धान उपज किया, हम आपके एफपीओ में दिए, तो उसका किस तरह का है वो वर्किंग को जरा समझाइए। हम लोग सर जैसे कोई भी गांव को पहले चयनित करते हैं कि इस गांव से हम लोग को शुरू करना है, तो वहाँ किसान को हम लोग जस्टिफाई करते हैं कि ये किसान इस टाइप से खेती या ये काम करने के लिए एग्री है। अब जैसे मान लीजिए कि धान अभी हम लोगों का किसान तैयार कर रहा है कि अभी हम लोग धान खरीदने का काम कर रहे हैं, तो हमने गांव में एक सेंटर बना रखा है। सेंटर में किसान जो है अपने उत्पाद को पहुंचाता है। अब जब सारे किसान मतलब हमारे पास जब ट्रांसपोर्टिंग इतना हो जाता है तो हम लोग उसको फिर मिल में भेज देते हैं। मिल में भेजने के बाद जो वहां से फंडिंग आता है और जिस तरह से किसान अपने उत्पाद को पहुंचाया है फिर उनमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये तो हो गया जो हमारे पास प्रोसेसिंग नहीं है उसका। अब दूसरा चीज आ गया जिसका हम प्रोसेसिंग करते हैं। तो प्रोसेसिंग में हमने एक रेट निर्धारित कर दिया है कि हम जैसे सरसों हम 50 रुपए किलो किसान से लेते हैं। एक निर्धारित रेट है, मतलब ये फिक्स नहीं है, निर्धारित है कि हमने 50 रुपए केजी किसान से रेट लिया। अब हम उसका तेल निकाले, खली हो गया जो भी है, पैकेजिंग किए मार्केट में, उसमें रेट भी उसको बेचने का भी रेट फिक्स होता है कि हम इसको 60 रुपए बेच रहे हैं। तो 60 रुपए बेच दिए तो 50 रुपया और 10 रुपया, 60 रुपया हो गया, तो 10 रुपया का बीच में डिफरेंस आ रहा है। तो उसमें हम लोग सबसे पहले उसका खर्च निकालते हैं। इसमें खर्च क्या आया हमारा, खर्च आने के बाद पूंजी कहाँ से इन्वेस्ट होगा, पूंजी का भी निकलेगा। उसके बाद जो बचेगा वो किसान को जाएगा, क्योंकि किसान हमारा शेयर बेच शेयर खरीदे हुए कंपनी का, तो वो फिर किसान को ही जाएगा। आपके पास कितने फार्मर्स जुड़े हुए हैं? हम लोग के पास सर मतलब एक एफपीओ में मिनिमम 2000 फार्मर है, तो 10,000 फार्मर अभी गढ़वा में जुड़े हुए हैं। और ये 10,000 से हम लोग खेती करते हैं, मतलब व्यापार करते हैं। इसमें हम लोग जो बीच का डिफरेंस आता है 3 जगह ही करते हैं। एक तो जो खर्च आ गया, लेबर चार्ज हो गया, मशीनरी खर्च हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो गया, रेंट हो गया, और दूसरा जो पूंजी लगा
अगर एफपीओ का पूंजी है तो कोई बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, लेकिन यदि पूंजी बैंक का है या किसी पर्सनल इंस्टीट्यूशन का है तो फिर उनको भी देना होता है, और प्रॉफिट जो बढ़ता है वो शेयर के आधार पर ही बढ़ता है। उनका इतना पूंजी लगा तो इतना शेयर होगा, मतलब एक शेयर पर हम लोग निकाल देते हैं और वो बढ़ जाता है। अब इस सब के देख रेख के लिए गढ़वा नबार्ड है, डीडीएम सर हैं, और आत्मा भी है, कभी कभी देख लेती है, और कृषि पदाधिकारी भी तो हमेशा गाइड करते ही रहते हैं। एक फार्मर कितना शेयर खरीद सकता है मैक्सिमम? मैक्सिमम 2000 का शेयर खरीद सकता है। 2000 शेयर खरीद सकता है। हाँ, एक शेयर का वैल्यू 1 रुपया है, कितना है? एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया। उसमें क्या है कि अगर आप 2000 का शेयर खरीदते हैं तो 2000 का शेयर भारत सरकार भी खरीदती है। 2000 रुपया कैसे है? हाँ, तो आप अगर 2000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 2000 रुपए भारत सरकार भी देती है, तो आपका 4000 रुपए, मतलब किसान का 4000 रुपए वहां जमा हो जाता है। अब वो शेयर सर्टिफिकेट हम लोग किसान को देते हैं। किसान जब चाहे अपना पैसा निकाल सकता है, लेकिन जो सरकार दी है वो 3 साल के बाद ही निकलेगा। और उसके लिए सरकार जो है हम लोग को एक सीओ, एक अकाउंटेंट और ऑफिस का जो सेटअप है वो देती है। अच्छा, आपका जो सीईओ है उसका सैलरी सरकार नहीं देगा? सरकार देगा। कितना साल तक देगा? 3 साल तक। उसके बाद आप अपने आप आत्मनिर्भर होंगे? हाँ, उसके बाद हम लोग को खुद, अगर हम लोग काम कर रहे हैं या हमारा सीईओ सही से है तो हम लोग खुद मतलब उतना कैपेबल हो जाएंगे कि सीईओ को सैलरी दे सके और अकाउंटेंट का सैलरी दे सके, ऑफिस का रेंट दे सके। तो हम लोग मतलब बहुत स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी इसलिए नहीं है कि क्योंकि अब कंपनी में हम लोग आ गए तो सीईओ कैसे आपको रिक्रूटमेंट होता है, किस तरह? वो तो सर डीडीएम नाबार्ड के ही उनको हायर करते हैं। जी सर। किसान तो सर प्रोडक्ट पहुंचाता है हम लोग का। अभी तो सर पूरी मार्केटिंग वही कर रहे हैं। आप उसमें क्या है? हम तो चेयरमैन है सर, अध्यक्ष हैं उसका। हम लोग अध्यक्ष हैं, उसमें 5 डायरेक्टर होते हैं, इसमें 4 डायरेक्टर हो गए, एक अध्यक्ष हो गए।
Yes, sir. Sir, she want to say, suggest something. हाँ मैम, हम लोग करते हैं ना, NCDC में और 2-3 जगह और है कहीं कहीं। सोशल मीडिया का यूज हम लोग करते हैं। यूट्यूब होगा, सोशल मीडिया, फेसबुक पे साइट पे लोग पोस्ट करते हैं, न्यूज़ पेपर में हाँ हाँ, आप अभी हम पूछ के आपको बता देंगे। कितना करते हैं उसमें। हाँ सर, DO भी है अंबिकापुर में, एक हमारे मतलब बगल के ही हैं। DO हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। जी सर, उस टाइप से बहुत लोग हैं अभी हमारे यहाँ के। बिल्कुल। जी जी सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। तो सर हम लोग सर से कांटेक्ट मतलब कैसे करेंगे? कांटेक्ट आपसे मेरे सर दे देंगे आपको एंड वो कनेक्ट कराएंगे तुलसी सर से। थैंक यू तुलसी सर फॉर बीइंग विद अस। आप कांटेक्ट करा देंगे, ठीक है? आप प्लान कीजिएगा, उसका जिस तरह प्रोसेस दरकार पड़ेगा, उस हिसाब से फिर हम कनेक्ट करेंगे इनके साथ, आपके साथ चैनल हो रहा है, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच, आप आइए, आपका बात रखा। So now the next presenter, Professor Viral Kumar Tiwari, right? So sir, please go ahead. Yeah, I am Bodh Gaya. Thank you very much, sir, and thank you ISI to organize this event. मैं हिंदी में बात करूँ। हाँ, कोई बहुत अच्छा। That would be nice. तो आप PPT खोल दीजिए, और PPT केवल कुछ पॉइंट्स लेने के लिए। ठीक। आप सुन पा रहे हैं ना ऐसे? हाँ। तो हमारा जो ISR का प्रोजेक्ट था लखपति दीदी स्कीम के ऊपर, तो हम बोले उससे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कितने लोग उस स्कीम के बारे में जानते हैं और क्या जानते हैं। लखपति दीदी, तो जाहिर सी बात है महिलाओं से बात कर रहे हैं। आपने सुना है लखपति दीदी नाम? क्या जानते हैं उसके बारे में? हाँ, बैठ के बताइए, कोई दिक्कत नहीं। 1 लाख रुपए का इनकम कर सकती है, कितने पीरियड में? नॉर्मली 1 साल में, एक फाइनेंशियल ईयर मान लीजिए, या एक एग्रीकल्चर ईयर, ठीक है? और वो इनकम कहाँ से आनी चाहिए? अपना रोजगार मतलब किस एरिया में रोजगार करना? हाँ, ठीक है। सो हालत आप देख रहे हैं, दुकान करना अलाउड नहीं है,
कोई जानता है? जो स्कीम है उसका सीधा मतलब डायरेक्ट उसका जो रिलेशन है वो एग्रीकल्चर से ही आपको बिजनेस करना है, ठीक है? एग्रीकल्चर में जो भी पैदा होता है, मतलब जो भी खेती किसानी से पैदा होता है या उससे रिलेटेड जो चीजें हैं, आप दुकान अगर आप गेहूं का दुकान करेंगे, चावल का दुकान करेंगे, बाजरे ज्वार का दुकान करेंगे, आटा चक्की करेंगे, वो एक्सेप्टेड है। परचून का दुकान नहीं चलेगा, ठीक है? कहने का मतलब है सो अब बात हो गई हमारा लखपति दीदी स्कीम, ठीक? इस स्कीम के फायदे क्या है, मतलब गवर्नमेंट ने ये स्कीम क्यों लाई आप लोगों के लिए? कोई लखपति आदमी के नाम से कोई स्कीम नहीं है नहीं? तो लखपति दीदी ही क्यों? कोई है क्या? पता नहीं, कोई है? कोई नहीं। हम लोग जैसे हाँ हम लोग एसएसजी में हाँ छोटा सा नहीं मिलता है 5,000 10,000, इस तरह से 5,000 10,000 बढ़ते जाता है। उस पैसा में लेकर हम लोग छोटा छोटा चाहे वो सिलाई करे या दुकान करे, तो उससे हम लोग को लाखपति बनना है, उससे करोड़पति बन सकते हैं। बिल्कुल, वो तो मिनिमम है कि आपको नाम वो लखपति दीदी का मिल जाएगा जब 1 साल में आप लाख कमाने लगे, लाख का बिजनेस करने लगे तो आपको लखपति दीदी का टैक्स मिल जाएगा, ठीक? हमारा जो पूछने का मतलब है कि लखपति दीदी आप अगर हो जाए तो उसके फायदे क्या? नहीं, अपने आप मतलब खुद से ही और हाँ उधर से थोड़ा पढ़े लिखे लोगों से भी सुन के आना चाहिए। इसीलिए आदमी को मैंने बोला ना, लखपति आदमी का नाम गवर्नमेंट ने क्यों नहीं प्रमोट किया? क्योंकि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना था। अभी अगर मैं पूछूं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप ही क्यों? वुमेन मतलब एंटरप्रेन्योर आदमी क्यों नहीं गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती? हर चीज के पीछे गवर्नमेंट का मतलब एक जो दिखाई देता है उद्देश्य, ठीक है, वो रहता है। दूसरा होता है उसके हिडन एजेंडा होते हैं, मतलब जो नहीं दिखाई देते। जो आप वुमेन एंटरप्रेन्योर बताया वो एक तरीके से हिडन है, बट इसके भी पीछे कुछ हिडन है। सिर्फ जो इंडिपेंडेंस बताया, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस एक तरीके से, वो भी एक हिडन पार्ट है। जैसे गांव में औरतों को कुछ भी खर्चा करने के लिए आदमियों से मांगना पड़ता है, ठीक? अगर आप लखपति हैं, ठीक है, या 1 साल में 1 लाख का आपका बिजनेस चल रहा है, तो आप अपनी छोटी मोटी आवश्यकताएं अपने आप पूरा कर सकते हैं। आपको आदमी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, ये ठीक है। बट इसके फायदे क्या है इसके ऊपर? ये तो आपका इंडिपेंडेंस हो गया। सोचिए इसके पीछे गवर्नमेंट का और क्या उद्देश्य हो सकता है? एंटरप्रेन्योरशिप जैसे एक बताया, हम एंटरप्रेन्योर लेडीज को क्यों बनाना चाहते हैं? एम्पावरमेंट। आप एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो एम्पावरमेंट में भी आपको एक ही जगह एम्पावरमेंट दिखाई देता है, लेडीज को घर के जैसे फैसले लेने होते हैं। ठीक है, मतलब तो हकीकत है, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं ना। अब वुमेन एम्पावरमेंट पे भी अगर बात करें तो फिर कहां पे पावर आ रही है वुमेन को? अगर लेडीज पूरी तरह आदमी के ऊपर डिपेंडेंट है, सबसे ज्यादा पैसे बोलते ना, ठीक है, फिनांस इज द पावर बात करते ना, पैसा में ही पावर, शक्ति है, ताकत है, ठीक। अब वुमेन एम्पावरमेंट अगर लखपति है, मतलब उसका वही कमा रहा है लगभग बराबर या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो वो एक जगह आपसे स्टैंड होके खड़े जाएंगे, नहीं ऐसे ही करना है। आदमी को भी सुनना पड़ेगा, वैसे भी हर आदमी सुनता ही है, वो अलग कहानी है। पति बाहर कमाने जाते हैं तो उसका भी सहयोग मिलेगा कि मेरी पत्नी लाखपति बन गई, तो और हम सहयोग करें तो बाहर क्यों जाए, नहीं कुछ करें। यहाँ खैर वो एक अलग पार्ट है, बट हम अभी एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे। आप थोड़ा हमको डाइवर्ट मत करिए। हम एम्पावरमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो एम्पावरमेंट में एक तो आपका जो डिसीजन मेकिंग आता है, सबसे पहला जो एम्पावरमेंट में आता है डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग भी कहाँ? एक तो मतलब आपको आप डेली बात कर रहे हैं, घर के जो डिसीजंस होते हैं छोटे मोटे, उनसे कोई बड़ा कुछ चेंज होने वाला है? नहीं चेंज होने वाला। चेंज कहाँ हो सकता है? जहाँ पे वुमेन का डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट करे। आप अपने गांव में प्रधान चुन रहे हैं, पंचायत के सदस्य चुनते हैं, गांव में जो चेंज मेकर होता है वो कौन होता है? बेसिकली आप बोलेंगे प्रधान या उसके पंचायत के सदस्य, वार्ड मेंबर जो है कि नहीं? चेंज मेकर गांव में यही लोग होते हैं जो गांव में कुछ भी चेंज ला सकते हैं। अब उसको इलेक्ट करने वाले
दो ही हैं, आदमी और, ठीक। अगर आदमी की ही चलती तो जिसको वो मतलब लेडीज तो पीती नहीं है, ठीक है, इन जनरल हम मानते हैं अभी भी गाँव में आदमी सब पीने वाले, और हर प्रधानी के इलेक्शन में आपको पता है आखिरी के महीना या हफ्ता खूब खिलाया पिलाया जाता है और पूरी तरह से ब्रेन वॉश करके उनका वोट ले लिया जाता है। अगर लेडीज इंपावर्ड हैं तो वो अपना प्रधान खुद चुन सकती है कि नहीं? और आपने देखा होगा कई बार कई इलेक्शन में पूरी कोशिश की जाती है कि लेडीज का वोट अगर आपने पकड़ लिया तो मतलब सीट आपकी पक्की है। समझ रहे हैं बात? तो एम्पावरमेंट कहां से आ रहा है? ये सारा जो आपको एम्पावरमेंट है पॉलिटिकल अपने नेता को चुनने का, और आपने अगर अच्छा नेता चुन लिया तो मतलब आपके गांव का विकास, आपके समाज का विकास, आपके एरिया का विकास तय, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक। तो ये एक हो गया आपका फिनेंशियल सेल्फ इंडिपेंडेंस, दूसरा हो गया वुमेन एम्पावरमेंट, तीसरा इसके पीछे क्या होगा और इसके पीछे का उद्देश्य क्या होगा? आपको आप कह सकते हैं कि हम अपने परिवार में साथ में, जैसे आपने बताया कि हमारा आदमी कमा रहा है, हम उसके साथ में कुछ भी कमा के ऐड करेंगे, तो आप अपने बच्चों का एजुकेशन में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैंने इसके पहले पूछा था वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का, ठीक है, वुमेन को एंटरप्रेन्योरशिप क्यों बनाना गवर्नमेंट चाहती है? ज्यादा मेहनत करती, मतलब हम आदमी सब निकल नहीं, ये हकीकत है, हकीकत इस हिसाब से है कि अगर आप देखें घर में जो भी, मतलब हो सकता है कुछ एक्सेप्शन है, ठीक, जिस घर की लेडी सर्विस में जाती है तो उसको डबल काम करना पड़ता है। घर में तो काम लेडीज वाले जो है वो करने ही पड़ते हैं, प्लस ऑफिस के काम भी करने पड़ते हैं, आपको लगभग सेम ही प्रेशर झेलना पड़ता है। आदमियों के साथ ऑफिस का काम है, उसके बाद आके घर में जो भी इधर उधर का काम है, ठीक है। हम यहाँ पे बात करें फिर से मुद्दे पे वापस आते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। तो मतलब लेडीज के पास वैसे ही ज्यादा पावर है ज्यादा चीजों को सही से मैनेज करने का, ठीक है ना। दो चीजें एक साथ हम मैनेज कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से ज्यादा एक से ज्यादा चीजों को मैनेज करने का। एक चीज और इसमें इंटरेस्टिंग है लेडीज के अंदर, कौन सी? बिल्कुल, मतलब यही तो। अब आप अपना पावर समझ रहे ना, सोच समझ के खर्च करती है, ठीक है, सोच समझ के। और बिजनेस के लिए ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पॉइंट कि आपने पैसा कहां लगाना है, ठीक है। अगर आप सोच समझ के नहीं खत्म करेंगे तो क्या होगा? आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट एक और एस्पेक्ट होता है लेडीज के अंदर जो बोलते हैं मातृत्व भाव, ठीक है। अब ये मातृत्व भाव का इंपॉर्टेंस एंटरप्रेन्योरशिप में क्यों है? बिल्कुल, हम धरती माँ बोलते हैं ना, धरती माँ, भारत माँ, ठीक। अब भारत माँ को बचाने का काम माँ से अच्छा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कितनी स्ट्रगल या कितना, आप चाहे एनवायरनमेंट की बात करो, पोल्यूशन की बात करो, वाटर की बात करो, कुछ भी क्लाइमेट की बात करो, हर जगह प्रॉब्लम है। तो ये कोशिश की जा रही है कि जो एग्रीकल्चर लाइवलीहुड पहले एग्जिस्ट करता था, जिससे पूरा एग्रीकल्चर रूरल एंटरप्रेन्योरशिप सिस्टम जो चलता था, ठीक है, अभी तक जितना हमने सारा बात की, ये बात की है शुरुआत से जब से मैं आया हूँ कि पहले हमारे पास कितने अच्छे अच्छे संसाधन हुआ करते थे, पूरा रूरल एंटरप्रेन्योरियल सिस्टम एग्जिस्ट करता था, और वो सब कोलैप्स हो गया कुछ कंपनीज आने की वजह से, या हमारा ब्रेन वॉश करने की वजह से, या हमने टीवी देख देख के अपने आप को बर्बाद किया, ठीक है, एडवर्टीजमेंट देख देख के। और फिर कुछ हो गया कि ठीक है हमको मॉल में नहीं आना, सुपर मार्ट से ही सामान खरीदना है, अच्छी ब्रांडिंग का ही सामान खरीदना है, भले ही वो हमारे लिए ही हानिकारक हो, ठीक। तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए वुमेन का एंटरप्रेन्योर होना एक ना ही परिवार को बचाएगा, पर ऐसा उम्मीद की जाती है कि वो धरती को भी बचा सकता है, गांव के पूरे एंटरप्रेन्योर सिस्टम को भी बचा सकता है। ये
मतलब मेरे हिसाब से जो मैंने कुछ करीब 1000 बिहार के 3 डिस्ट्रिक्ट्स का लगभग सारे ही पॉपुलेशन बोलेंगे, सैंपल नहीं, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप में 1000 के प्लस ही टोटल बिहार में 3 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे पास ये लखपति दीदी थी। तो हमने सारों का ही डेटा कलेक्ट किया और सारों का डेटा कलेक्ट करके उनके तमाम सारे डेमोग्राफिक और जो इकोनॉमिक और उनके सोशल, उनके पॉलिटिकल, उनके सबके ऊपर उनकी इम्पैक्ट असेस किए। ठीक है, और इसके पहले जो अभी कहाँ चले गए, और जो फार्मर प्रोड्यूसर जो थे, ठीक है, ये बात कर रहे थे लोन जो हमको पूरा लखपति दीदी की स्कीम है, या इनफैक्ट अगर सारी गवर्नमेंट की स्कीम में हम बात करें, ठीक है, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम चलती है किसानों के लिए और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए, उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है, गवर्नमेंट तो बोलती है कि बैंकें फ्री में लोन देगी, ये प्रोसेस बहुत आसान होएगा, बट एक्चुअल में क्या होता है? जो सबसे बड़ा हमको मतलब जो प्रॉब्लम इधर सुनने को मिला सारी लेडीज से, टाइम से अगर आप लोन लेने जाएंगे बैंक में, टाइम से कभी गवर्नमेंट का इनफैक्ट कोई काम नहीं होता टाइम से, ये हकीकत है। और ऐसा क्यों है? जब तक हम इन चीजों को सुधारेंगे नहीं, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा जो भी उद्देश्य है वो पूरा होगा? जब तक ये जो डिले है, ठीक है, और आपको जो इसके पहले हम बात कर रहे थे वो सीईओ को किसी को अपॉइंट किया, ठीक है, ये पूरा ब्यूरोक्रेसी और इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी, कोई भी गवर्नमेंट बता दीजिए, एम्प्लॉयमेंट भले उसने दिया हो, हम नहीं कहते, बट अगर उसका बिजनेस के टर्म में बात करें, अगर हमको बिजनेस क्रिएट करना है, ठीक है, और वो भी बिजनेस रूरल सेटअप में, तो आपको एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, आपको नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, हम प्रॉफिट मेकिंग की बात नहीं कर रहे, प्राइवेट माइंडसेट से सोचना पड़ेगा, जिसका उद्देश्य बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो बट समाज को रोजगार देना हो। यह हमारे गोइंग बैक जो सिनेरियो है कि गांव में ही जो लोग गांव से वापस गए हैं वो वापस गांव में आए। अभी जैसे हम लोग दोपहर में ही बात कर रहे थे, आज के टाइम में चाहे आपका दीपावली का दिया हो, एक छोटा सा बहुत एग्जांपल, वो भी आपका एक्सपोर्टेड आइटम। क्या हमारे गांव के कुम्हार मर गए? अब अगर वो नहीं मर गए तो उन्होंने धंधा छोड़ दिया, क्या उनको रिवाइवल नहीं किया जा सकता? क्या उनका कुछ ऐसा सेटअप इकोसिस्टम नहीं क्रिएट किया जा सकता जिसके थ्रू वो अपना बिजनेस फिर से पूरा सेटअप करें? यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी समस्या आती है एज ए कंज्यूमर, हम क्या एज ए कंज्यूमर उन चीजों को सपोर्ट करते हैं? अगर आप दीपावली में बात करें, कितने लोग मिट्टी के दिए कितने क्वांटिटी में लेके आते हैं? हकीकत में अगर बात करें, कितने लोग कितने क्वांटिटी में लेके आते हैं? और वहीं पे अगर मोमबत्ती की बात करें, कैंडल की बात करें या लाइटनिंग की बात करें, वो आप कंपेयर करिए। तो आप अगर बात करते हैं रूरल एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने की, तो बढ़ावा केवल बात करने से होगा? आप बिजनेस सेटअप करने से बिजनेस सेटअप हो जाएगा? भाई आप दुकान खोल लीजिए, क्या दुकान खोलने से दुकान चल जाएगा? दुकान चलेगा जब दुकान से सामान खरीदा जाएगा, जो उसका कंज्यूमर होएगा तो दुकान चलेगा। जब आप मिट्टी के बर्तन ही नहीं खरीदते, मिट्टी के दिए नहीं खरीदते, गांव का जो रूरल जो मैन्युफैक्चर करता है, जो भी सामान करता है, उसको खरीदते नहीं, तो आप कैसे उम्मीद करिएगा रूरल एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप एक बड़ा बिजनेस उठ के खड़ा हो जाएगा? हम जैसे भी बात करें, ऑर्गेनिक करके एक बहुत बड़ा इस टाइम क्या कहते हैं बजवर्ड टाइप का क्रिएट हुआ, ठीक? कौन खाता है उसको, कौन खरीदता है? यहाँ पे जितने भी लोग बैठे, कितने लोग ऑर्गेनिक फूड खाते हैं या ऑर्गेनिक सामान लेके आते हैं? हम सब आम आदमी है ना, ठीक? और पूरे इंडिया में आम आदमी कितने? 2 लोग को छोड़ के। हकीकत है, ठीक है, कुछ लोगों को छोड़ के बाकी तो सब आम आदमी है। अब वो आम आदमी की चीज बनी हुई तो खाते नहीं, ठीक? ऑर्गेनिक फूड कौन खाता है? इनके पास आपको ऑर्गेनिक फूड ज्यादा महंगा है, अल्ट्रा एलीट, ठीक है, अल्ट्रा एलीट का प्रोडक्ट खाने के लिए आपके पास ज्यादा पैसा होना पड़ेगा। और वो प्रोडक्ट कौन बनाता है?
कहाँ फार्मर बनाता है? और नहीं, बिजनेसमैन बनाता है। नहीं, अगर वो मिडिलमैन बनाता भी है, मतलब हम कहते हैं प्रोड्यूस भी करता हो, ठीक है, भले ही ये जो बता रहे थे अपने यहाँ ऑर्गेनिक बनाते हो, कि क्या ये डायरेक्टली सप्लाई कर देते किसानों? हो सकता है कुछ हद तक कर देते हो, बाकी हो सकता है कोई बड़ा रिटेलर लगाओ, वो उठा के इनसे खींच लिया और अपना ब्रांडिंग लेबलिंग किया और उठा के अपना सुपरमार्केट में बेच रहा है वही सामान, और वही सामान खरीदा जा रहा है उससे 2 गुना या 3 गुना दामों पे एलीट क्लास के द्वारा। हम कैसे सेटअप कर पाएंगे, कैसे उस सिस्टम को कोलैप्स कर पाएंगे? जैसा भी तुलसी सर बता रहे हैं, ये जो पूरा जो बिजनेस मॉडल था, ठीक, पूरा रिच के लिए, और इस पूरे आप अगर बात करें 70-80 सालों में हुआ क्या है? सिर्फ एक ही चीज हुई है, रिच और पुअर के बीच में डिवाइड बढ़ी है। रिच केवल रिच होते गया है, पुअर केवल पूरा पुअर होते गया है। आपको आप देखेंगे कि इनकम बढ़ गया, ठीक है, सबका इनकम बढ़ा है, बहुत लोगों का बिना कुछ काम किए इनकम बढ़ गया। रीजंस तमाम अलग अलग है, ठीक, बट वो इनकम बढ़ने से क्या हमारी जिंदगी में कुछ असर आया? क्या आपने अपने बच्चों की जिंदगी में कुछ चेंज लेके आया? आज के टाइम में जितने भी ग्रेजुएट्स होते हैं, ठीक, जितने भी पास आउट होते हैं आपका हाई स्कूल इंटर, जो भी नौकरी लायक हो जाते हैं, कितने लोगों का एक्चुअल जॉब सही में जॉब लग रहा है? गवर्नमेंट कहती है हम आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाएंगे, आप अपना नौकरी खुद करिए क्योंकि हमारे पास इतनी जॉब नहीं, ठीक। अब क्या आपने उनको ऐसा पढ़ाया है जो खुद से अपनी जॉब क्रिएट कर पाए? भाई खुद से अपना जॉब क्रिएट करने के लिए भी तो उनको ऐसा बताना पड़ेगा ना, वैसा पढ़ाना पड़ेगा। आपने नॉर्मली हाई स्कूल में मैथ पढ़ाई, साइंस पढ़ाई, जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, वो पढ़ के वो आदमी जॉब कैसे अपने आप क्रिएट कर सकता है या अपना बिजनेस कैसे क्रिएट कर सकता है? ठीक, आपने बोला हमने उनको स्किल ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स देना है, जैसे लखपति दीदी के लिए बहुत सारे प्रोग्राम फॉर एग्जांपल चले, हमने भी आए में 1 हफ्ते का प्रोग्राम चलाया, Day2 को बुलाया बहुत सारी, और उनको सारे पूरे जो मैनेजमेंट के फंक्शन थे, फिनांस, मार्केटिंग, एचआर, ठीक है, ऑपरेशन, वो सब पढ़ा दिया पूरे 6 दिन में कि कैसे आपका पैसा मैनेज करना है, कैसे उसको मार्केट करना है, किधर किधर अपना नेटवर्क ढूंढना है, किधर किधर बेचना है, ठीक, वेल एंड गुड। वो ट्रेनिंग का इम्पैक्ट गवर्नमेंट बहुत पैसा खत्म करती जैसे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के लिए, बट ये ट्रेनिंग फ्रूटफुल हो ये कैसे पता चलेगा? तमाम सारे कॉन्फ्रेंसेस, तमाम सारे इवेंट होते हैं ना, हर स्पीकर नॉलेजेबल आदमी आता है और अपने थॉट छोड़ के चला जाता है, बोल के चला जाता है, बट क्या वो थॉट, ये लाइकवाइज रिसर्च पेपर, जैसे बहुत सारे लोग रिसर्च पेपर लिखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक, वो सब लिख गया, पढ़ गया, बट वो कहाँ दिखाई दिया? हम इन सब बातों की बात नहीं कर, हमारा सिर्फ कहने का मतलब, अगर आप एक्चुअली में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं इंडिया, बचाना चाहते हैं गांव, सेटअप करना चाहते हैं रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, तो सिर्फ बात करने से नहीं होगा, हर आदमी को उस डायरेक्शन में अपने लेवल पे जो भी वो कर सकता है वो करना पड़ेगा। जैसे अगर हमें रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को बचाना है या उसको बढ़ाना है, तो रूरल से बना हुआ जो भी सामान है वो हम खरीदना स्टार्ट करें, कंपनी से बना हुआ जो सोफिस्टिकेटेड पैकिंग में है सामान उसको खरीदना बंद करें, तभी हम कहेंगे कि उस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा, तभी एक्चुअल जो कन्वर्जन की हम बात कर रहे हैं, एक्चुअल जो हम रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को सेटअप करने की बात कर रहे हैं, तभी होएगा। हम हमेशा, अभी दोपहर में बात कर रहे थे भैया से, जैसे प्लास्टिक है, ठीक, मैक्सिमम यूज होता है, क्यों यूज होता है? सबसे सस्ता। हमेशा दुनिया में एक ही रूल है, सबसे घटिया ही सबसे सस्ता होता है ना? जो सबसे घटिया चीज होती है वही सबसे सस्ती होती है, और आदमी के माइंडसेट में पैसा इस तरीके से घुस गया, जैसे तुलसी सर भी बोल रहे थे, हम सिर्फ सबसे घटिया या सबसे सस्ता चीज की तरफ भागते हैं, हम कभी ऐसा नहीं भागते कि हमारे आगे आने वाली जनरेशन को हम क्या क्वालिटी देके जा रहे हैं। जो ग्रीन जीडीपी की बात करें या हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें, उस पर तो हम कोई बात नहीं करते, हम तो कोर वैल्यूज की बात कर रहे हैं। हमारे पास जो पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम हुआ करता था इंडिया का, वैल्यू बेस्ड था,
कभी अर्थ बेस्ड नहीं रहा, हमने उसको पूरा खत्म कर दिया, पूरे अर्थ बेस्ड भी आ गए। और अर्थ बेस्ड ने क्या किया, हमारी पूरी वैल्यूज को खत्म कर दिया। आप परिवार में देखिए सारी वैल्यूज खत्म हो गई, गांव की सारी वैल्यूज खत्म हो गई। मुझे अपना बचपन याद है, मैं जब भी गांव में जाता था, मतलब मैं नवोदय में पढ़ा, तो 6-6 महीने में जैसे बीच में छुट्टी होती थी तो कभी जाते थे, पूरे गांव में स्वागत होता था। और जब भी 1 महीना तक, मतलब एक बार अपने घर में खाया, दोपहर में खाना दूसरे के घर में खाया, फिर तीसरे के घर में खेला, चाहे उसके यहाँ हो। आज क्या आप ऐसा गांव देखते हैं? घर में जाके घर में ही रुकना पड़ता है। शहर में तो पहले से ऐसा था कि पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता, बट गांव में जो एकजुट होने का, जो भाईचारा होने का वो था, वो सब खत्म हो गया। किसकी वजह से? चंद पैसों की वजह से। ये पैसे ने सब खत्म कर दिए। पूरा खत्म नहीं हुआ। हो सकता है कुछ गांव नहीं, पूरा खत्म नहीं हुआ, इसीलिए the way you are giving that picture, everything is over. नहीं, everything is not over. Okay, so please don't. I mean, this is you can say it has gone down, but at least you should not say that everything is over in village. एवरीथिंग ओवर का मतलब इतना ज्यादा खत्म हो गया। नहीं, ज्यादा नहीं है, आपका पर्सपेक्टिव में भी इट्स योर पर्सपेक्टिव, बट जितना मैं देखा, या आपका मेरे गांव का, भाई मेरा जितना एक्सपीरियंस है जैसे यहाँ का, इट इज स्टिल वेरी वेरी, क्या कहते हैं आप, ग्रीन एंड, मतलब इधर शहर का इम्पैक्ट नहीं है। मैं कल बोल रहा था कि आप गया साइड, पटना साइड या दिल्ली साइड, इवन बंगाल साइड इस तरफ जाएंगे, आपको शहर का इम्पैक्ट दिखाई देता है। ये एरिया अभी भी आपका बचा हुआ है। हम बोलते हैं शहर से इंटरलिंक करो, बट मेरा एक ही फियर है, शहर से इंटरलिंकिंग करने का जो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होने वाला है, हमारी जो भी बची हुई, जो भी क्या कहते हैं, हाँ, वो कहीं ना खत्म हो जाए। हम हसन सिटर जो हमारी बची हुई वो कहीं ना खत्म हो जाए। हम आप उसको कनेक्ट करिए, बट वो थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे अभी तक मान लो जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट के जो भी रीजन्स थे जहाँ पे लैंड खरीदना या गवर्नमेंट ने मना करके रखा हुआ था, उसका रीजन नहीं था। जो प्रोटेस्ट चला वो यही था कि वहाँ के लोग आके पूरा वहाँ का कल्चर ना डिस्ट्रॉय कर दें। सो सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है कि सेटअप करना, बातें करना एक थोड़ा अच्छा रहता है, बट वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हो, उसका प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक नॉर्मल तरीके से अगर बात करें, युद्ध करना तो स्टार्ट करना तो आसान होता है, बट वो कहाँ पे जाके खत्म होएगा उसको कोई प्लान नहीं कर सकता, ना ही कोई कंट्रोल कर सकता है। तो इतना ही। और जो भी आप लोगों के थॉट है, मतलब इट वाज लाइक मैं ही बोल रहा था, मैं सोचा था थोड़ा ठीक है, नहीं, हम पॉजिटिव भी सुनना चाहते हैं। यही बात है। The floor is open for question and so Mike, let me ask you a couple of questions. So actually प्रयास जो हो रहा है for betterment के लिए, बिल्कुल, and आप तो देखिए कुछ गांव में हुआ मॉडर्नाइजेशन, ये हुआ, ये उसका कल्चर थोड़ा, and you should also believe, you should start believing that change is the only permanent thing in this world. बिल्कुल एग्री। आप चाइल्डहुड में जो कुछ था अभी नहीं है, आपका जो सन डॉटर्स जो है वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में है, so that you have to accept it. That doesn't mean that everything is over. I mean, we should not generalize and we should not create some kind of some kind of a pure psychosis that by इसका कारण भी हम ही है। नहीं, so कहा वही है, we are coming, we are creating and at the same time we are creating pure psychosis. अरे भाई, this is over, nothing is over, it's a part of a change, right? And if you go to data and other things, we are doing better. Earlier, suppose हमारे गांव में एक जो था, बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिलता था। हम वही मैं बोल रहा, सबका इनकम यहाँ बढ़ गया। नहीं यार, मैं वो बता रहा हूँ। हम सोच रहे थे हम लोगों को जिसको खाना मिलता था, हम लोग सोच रहे अरे, I think everybody is like that. I am feeling well that other villagers जो जैसे less privileged society से आते हैं, उसको भी खाना नहीं। So later on when we started analyzing, ये लोग भूखा थे,
उसका भी चाइल्ड जो हमारे साथ पढ़ने के लिए गया था, बट दैट काइंड ऑफ सिचुएशन यू वोंट फाइंड दिस डेज इन विलेजेस. इट हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट. Inclusivity is there. Maybe whatever it's your personal experience, somewhat that affection it has gone down because it's a part of a market, and the market a little bit it will change. Yes. But if you look at social welfare, okay, जो less privileged थे, वो betterment में है. जैसे हमारा ये जो साथी है, जैसे हमारा लखपति दीदी और वो आर पार्टिसिपेटिंग, वो कहाँ थे उस टाइम में? वो तो जुबान खोल नहीं पाते. अभी तो वो आके इधर बैठे एंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं भाई एकेडमी की डिस्कोर्स में. बिल्कुल, ये सबसे एक अच्छा प्रोग्रेस है. इट्स अ इंडिकेटर ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट. एंड सो दे आर आल्सो फ्रॉम विलेज. सो ये पार्टिसिपेशन कहाँ था? कुछ नहीं था. हमारा अनदर सिस्टम सोशल प्रॉब्लम्स, कास्टिज्म एंड लॉट. नो आई एम एग्री 100%. इतना था, इतना बुराई था. अभी आप देखिए इकोनॉमी की प्रोग्रेस के हिसाब से कास्टिज्म कितना दूर है. कास्टिज्म नहीं है, खत्म हो जाएगा भाई विलेज में. हो जाएगा. I am telling you in the upcoming days. Yeah. हाँ नहीं, वो अच्छा क्वेश्चन किया. So let me tell you. हो तो जाएगा जब मनी आ जाएगा. दो चीज आप थ्योरेटिकली बोल रहे हैं ना प्रैक्टिकली? नहीं, प्रैक्टिकली मैं बोल रहा हूँ जब इकोनॉमी की डेवलपमेंट होगा, राइट, casteism particularly that won't be there because you say. मैं एक क्वेश्चन जस्ट पूछ रहा हूँ. नहीं, just let me clarify, then you can ask counter question. So सर नहीं, कास्ट का नहीं, मैंने बता रहा हूँ एक चीज खत्म नहीं होगा with the economic progress, that is black and white difference in America, but in caste discrimination or caste gap will be over with economic growth. That guarantee will give. That is for sure. I am telling you. You go to village. नहीं सर, ये नहीं हो सकता. अरे वो आप जो वो होपलेस बात कर रहे हो. दो एक चीज नहीं दो चीज हो रहा है. ये हमारे से दो क्वेश्चन. एक है हमारा जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को इस तरह इमर्ज हुआ है, करंट पॉलिटिकल सिनेरियो. Right. Is it really addressing the caste problem, class problem, or it is creating another caste and class? Okay, I am telling you. One question. Second question is that regarding the entrepreneurship also, I have visited many villages in many blocks also, APOs also. Majority areas में जो major problem हमको देखने को मिला, caste related biases. जो board of directors है, कुछ जगह में ये है, जो CEO बने हैं, कुछ लोग कह नहीं पाते, बट ये भी आता है कि जो लोग अपर इससे, अपर कास्ट से, अपर क्लास से, तो पॉलिटिकल और इकोनॉमी साइड दोनों साइड से अगर देखेंगे, पॉलिटिकल इकोनॉमी not actually reducing, it is also inducing the form of different forms of caste and different forms of class problems. जो कास्टिज्म में हम लोग जो दिख रहा है गाँव जो इकोनॉमी की ग्रोथ आफ्टर 1991 उसके बाद जितना गैप था वो बहुत रिड्यूस हुआ. आई एम टेलिंग यू इफ वी कैन ग्रो बाय डबल डिजिट in the upcoming days, ये खत्म हो जाएगा कास्टिज्म देश में. सर टेंजिबली बट अमेरिका में जितना ग्रोथ होने के बाद ब्लैक एंड व्हाइट खत्म नहीं होगा unless there is सिस्टमेटिक क्लाइमेट चेंज. हो सकता है कुछ टेंजिबल चेंज हुआ. अभी इसमें सर मेरा थोड़ा सा इनपुट है. आई डोंट नो, फिनांस इज वन पार्ट ऑफ इट जो हेल्प कर सकता है रिड्यूसिंग, आप कास्टिज्म बोलो या इनइक्वालिटी वैसे बोलो, ठीक. और मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा अगर लोगों का सोच बदले, स्पेशली जैसे जितना भी आप मतलब सॉरी टू जितने भी बहुत बुजुर्ग लोग हैं उनके अंदर वो थोड़ा ज्यादा लेवल पे है. और अगर आप बात करें कि जैसे हमारे बच्चों में, ठीक है, उनके अंदर वो बिल्कुल नहीं हुई. और आप अगर आप बात करेंगे उसके आगे आने वाली जनरेशन की, मेरे ख्याल से लगभग नहीं होगा. तो ये है जो जिस तरीके से सारा जो जनरेशन है ग्रूम हो रहा है, ठीक, दैट इज मोर इम्पैक्टफुल. क्योंकि आप अगर आपस में एक दूसरे को, हम गांव के भाईचारा की बात कर रहे हैं तो हम कास्टिज्म नहीं ला रहे बीच में. हम मैं मतलब नहीं नाम लेना चाहता, बट मेरे गांव में मैक्सिमम जमात पासी लोग रहते, ठीक है. और मैं किसी के घर में घुसता था बचपन में, किसी के घर में खेलता था और सब लोग ऑफर करते थे. हमारे गांव में कोई ऐसा नहीं था, ठीक. बट
जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो जो जो मतलब मैं बोला था प्रेम, ठीक है, प्रेम अभी भी जाते हैं, सब लोग बहुत अच्छे से मिलते हैं, बट वो प्रेम अभी धीरे 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 करके आपस में जो छोटे छोटे क्लैश हैं, मतलब फालतू के क्लैश हैं, उनकी वजह से किल हो रहा है। वो बचाने के लिए लेडीज का जो योगदान, हाँ, योगदान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जब तक जोड़ेंगे, लेडीज जोड़ने के लिए होती है समाज को, ठीक है, वो जब तक जोड़ेंगे नहीं, वो डिफिकल्ट है। वो बच्चों को भी ज्ञान तो वही देती है ना, माता का सबसे पहला गुरु तो माता ही होता है, राइट, बच्चों का सबसे पहला गुरु, तो उन्हीं की तरफ से हमारे माइंड को चेंज करने वाले लेडीज है, और उनके थ्रू ही हम उम्मीद कर सकते हैं कि सब कुछ बदलने का जो है संभावना है। बचपन में आपके पास फाइनेंशियल पावर नहीं था, लेकिन आप बड़े हो गए, फाइनेंशियल पावर आ गया आपके पास, कहीं वही तो रीजन नहीं है? किस चीज का? मतलब प्रेम एंड अफेक्शन नहीं कम हो रहा है। मैं आपको बताऊं, हकीकत में बचपन में खैर आपको मैं बहुत गरीब था, ठीक है, और मेरे घर में ये बात तो सही है, नहीं हकीकत सम एक्सटेंट ट्रू, मतलब आप फाइनेंशियली बहुत अच्छे जगह पर पहुंचेगा। भाई वो आपको बच्चे थे, अभी भी मैं अपने गांव में जाता हूँ, ठीक है, मैं नंगे पैर जाता हूँ और गमछा लगा के और बनियाइन पहन के घूमता हूँ, हकीकत में बोल रहा हूँ। अभी भी गांव के लोग बोलते हैं कि भैया केवल आप ऐसे हैं, मैं देखा जो बंबई दिल्ली कमाने जाते हैं महीना 15 दिन के लिए, उनका बोलचाल और कपड़ा सब बदल जाता है, आपका इतने 30 साल में नहीं बदल। तो वो कनेक्शन आदमी को भी बिठाना है। एक बहुत छोटा एग्जांपल देते हैं, हमारे पास जैसे जब हम पैदल चलते हैं, ठीक, साइकिल वाला अगर आ रहा है, साइकिल वाला क्या बोलेगा, घंटी बजाएगा, पैदल वाले को हटाना है, मेंटालिटी। पैदल वाला क्या सोचेगा, अरे यार इतनी जगह पड़ी है तो साइकिल से जाना, ऐसे घुमा के जा सकते थे, हमें क्यों हटाना है, ठीक। ये आदमी की मेंटालिटी जैसे ग्रो करता है। दूसरा, आप साइकिल छोड़ के मोटरसाइकिल पे आ जाइए, जब मोटरसाइकिल से चलेंगे तो क्या होगा, मतलब दूर से साइकिल जा रहा है, पहले से ही हाथ उसको पो पैदल साइकिल सब हटाओ, हमको जाने देना। साइकिल वाला बेचारा 10 पैडल मार के थोड़ा रेस बनाया है, तुमको तो खाली एक्सीलेटर मारना है, और तुमको उसको भाई स्पीड जा रहा है, उसको जाने दो ना, तुम अपना कार्ड फूट के निकालो, या जैसे भी टाइम मिले निकालो, नहीं करेगा। कार वाले को देख लो, ठीक, कार वाला क्या करेगा, मोटरसाइकिल वाले को किनारे करना है, साइकिल वाले को किनारे करना है, मुझे जाने देना है। ये मेंटेलिटी है, इस चीज को ही मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ नंगे पैर, और जो मैं आपको बताया कि मेरे पास वैसी सोच नहीं आनी चाहिए। हम जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ ये कि अगर आप आपस में लोगों का मतलब प्रेम, आप जैसे उनको देखते थे, आप अपना बचपन याद करिए, या अपने क्या मैं बोलूंगा, उस चीज को याद करिए कि अगर मैं आपकी जगह होता तो कैसा लगता मुझे। एक जो सबसे सिंपल प्रिंसिपल है कि अगर मैं आपकी जगह होता और मेरे साथ कोई ऐसा ट्रीट करता तो मुझे कैसा लगता, आपको आंसर मिल जाएगा। समाज में एक साथ और प्यार से रहने का इससे अच्छा कोई मूल मंत्र नहीं। आप कभी भी दूसरे को सोचिए कि अगर मेरे ऐसे करने से क्या इसको मदद होएगा, किसी का मदद होएगा। अगर आपका आंसर यस आए, सही है, आप 100% करेंगे, आंसर नो आए आप मत करिए। थैंक यू प्रोफेसर। ऐसा तो नहीं है लाखपति दीदी वो बन के फिर मातृत्व तो चला जाएगा पैसा में से, तो ये भी तो तैयार होता है। अब ये तो एक बिहार में एग्जांपल है ना, वो आईएएस बनने के बाद हस्बैंड को छोड़ दिया Dr. Amia, you please present your report. Just before 10 minutes, I will because we are time busy. Good afternoon, everyone. Respected chair, esteemed delegates, fellow researchers, ladies and gentlemen. From the core of my heart, let me thanks to the organizers and organizing committee. Professor Harisha is my PhD supervisor. He is not only my PhD supervisor, he is my life mentor actually. From the bottom of my heart, let me thank. My research focus is on indigenous rural entrepreneurship in the mining region of Odisha, where livelihood transition and sustainability pathway. There is a structural barrier actually. I will not go to deep into the research topic.
because the time and space is constrained. So briefly I will summarize why this study and what are the policy implications for the sustainable pathway. Uh, the mining-led development, the mining is basically it's for development and its output, revenue generation. But villages in scheduled area often experience land and forest loss, displacement, and environmental degradations. These changes undermine subsistence agriculture, where rain-fed paddy culture or agriculture is going on. And forest-based livelihoods from the last one day and today morning sessions, before we all talked about that NTP products that non-timber produce salt trees, and root making from the savai ghas. So these are the livelihood parameters that resources they are going to deplete. हाँ हिंदी में बोलते हैं सॉरी हम जो बात करते हैं अभी की ये जो खनी का एरिया होता है वही खनी खदान में जो चलते हैं उनका जीविका कैसा चल रहा है तो वहाँ का जो एंटरप्रेन्योरशिप समिट हम लोग का चल रहा है वो उधर एंटरप्रेन्योरशिप कैसे हो रहा है एक दो केस स्टडी में बताऊंगा उधर का जो खनी एरिया में कैसे होता है ज्यादातर लोग वहाँ का जो है सुंदरगढ़ बेस्ट जो मेरा स्टडी एरिया है वहाँ का ज्यादातर ट्राइबल पीपल है तो इस ट्राइबल पीपल में जो है वुमेन्स आर मोर एम्पावर्ड देमसेल्व्स नो नीड टू एम्पावर देम ये जरूरत नहीं है कि वुमेन को एम्पावर करना है पुश करना है आगे ठेलना है ये जरूरत नहीं है ये उनके अंदर ही है क्योंकि ये लोग घर ही संभालते घर के संभाल के साथ साथ वो जो उनका रोजगार है उसी को बेहतर बनाते हैं क्योंकि बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर को मैं मिला हूँ सुंदरगढ़ में वो लोग खुद का खेती चलाते हैं उनका जो हस्बैंड का काम ऐसा ही है वो उसको मार्केट में पहुंचाने का काम करते हैं सिर्फ दे आर द ड्राइवर वो लोग ड्राइविंग का काम करते हैं गाड़ी पकड़ा दिया अब तो जो भी खेती का काम टमाटर का खेती किए सब्जी का किए धान का किए जो भी किए हैं ये लोग फसल उगाते हैं और उसको लेके डब्बा में डाल देते उसका हस्बैंड को लेके उधर पहुंचाना है क्योंकि ये लोग क्यों मार्केट नहीं जाते हैं देयर इज ए रीजन कारण क्या है कारण यही है कि ये लोग का बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं है जो हम लोग इलाइट ग्रुप बोलते हैं वो लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खरीदते हैं ये सब चीज बोलते हैं ये लोग दे आर मोर बार्गेनिंग ज्यादा करते हैं वुमेन के जो हाटिया में बेचते हैं जाके क्योंकि वो लोग बार्गेनिंग नहीं कर पाते इसीलिए दैट्स व्हाई द मेल इज गोइंग टू द मार्केट टेकिंग द प्रोडक्ट्स टू द मार्केट जो भी ये लोग का एक स्टोरी होता है कि मार्केट से जो आता है पैसा उसको कौन केयर करेगा क्योंकि हस्बैंड तो लेके जा रहा है वो तो उधर दारू पी के सो जाएगा उनका टेंडेंसी है क्योंकि उनको घर से इंस्ट्रक्शन मिला है इतना डब्बा लेके गया है तो इतना पैसा होगा वो पैसा मेरे को देना है और जो बचेगा वो तुम्हारा है हस्बैंड का वही होगा ये लोग का सिस्टम ऐसा ही है साल का पत्ता भी कोई बेचने जाएगा तो लेडीज जाते हैं साल का पत्ता बेचने के लिए क्योंकि इट इज जस्ट शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम खूब कम टाइम के बीच में वो लोग बेच के वापस घर आ जाते हैं क्योंकि घर का काम भी उनको संभालना होता है तो जो साल का पत्ता वो लोग जब बेच के आते हैं तो उनका जो पैसा है उनके पास रहता है उसको डिपॉजिट करने के लिए जाएंगे वो थ्रू सम ग्रुप ऑफ लीडर्स दे हैव देयर ओन ग्रुप्स ये ग्रुप के हिसाब से जाके बैंक में जमा देते हैं और बैंक का जमा के हिसाब से ये लोग फिर उधर से लोन लाते हैं जिससे कि अपना का एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ा सकते हैं क्योंकि यहाँ जो स्ट्रक्चरल बैरियर है जो बोलते हैं हम लोग का देयर इज मार्केट लिंकेज ये लोग के पास नॉलेज का कमी नहीं है हम लोग का जो खेती करते हैं हम लोग दूसरे लोग से सलाह लेते कि कैसे खेती किया जाएगा लेकिन वो लोग सलाह देते हैं ऐसे ऐसे करना चाहिए जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बात हो रही है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कैसे बनेगा वो लोग का जो फर्टिलाइजर्स होता है पेस्टिसाइड्स होता है वो खुद बनाते हैं
इसीलिए जो इनपुट है कॉस्ट है वेरी लेस, बट द प्रोडक्ट्स वट एवर दे आर प्रोड्यूसिंग उसका ड्यूरेबिलिटी वेरी लॉन्ग है, लॉन्जिविटी ज्यादा है। अभी हम लोग आप टमाटर खरीद के मार्केट से लाएंगे तो 2 दिन में सड़ जाएगा, लेकिन वो लोग जो ऑर्गेनिक वे में बनाते हैं, आप लोग जैसे बोलते हैं नेचुरल तरीके से बनाते हैं, अपना जो किसानों का जो पेस्टिसाइड्स जो जीवामृत, बीजामृत, घना जीवामृत आप लोग सुने होंगे, वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, नीमा वस्त्र, यस एब्सोल्युटली राइट। ये चीज जो वो लोग इस्तेमाल करते हैं, जो प्रोडक्ट निकालते हैं, उन उसको मार्केट में खरीद के लाने से आप लोग का यू कैन स्टोर इट फॉर मोर देन 2 weeks इन ओपन एरिया। एक कहानी मैं बता देता हूँ। एक सुंदरगढ़ का एक लड़का है, 20 साल का है, उसका सिर्फ टमाटर का खेती है और वीकली हफ्ता में वो 3 बार हटिया जाएगा। हर हफ्ता में उसी को 2 ट्रक बेच देता है विद इन 3 to 4 hours, और दूसरा लोग जो लाते हैं मार्केट में वो इसे दिन भर बैठा रहता है। क्यों ऐसे क्यों होता है? बिकॉज ये कारण ऐसा है कि ये लोग का जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, इसी के वजह से वो अभी गुड एंटरप्रेन्योर सुंदरगढ़ में थे। सो ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा, इसे मेरा वक्त खत्म करके मैं धन्यवाद। So we have come to an end. Any questions? Okay. Sir, I had a question with not बोलो यही से बेटी बोल या अभी सर से हाँ वो जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है, अदरवाइज वी कैन आस्क ओवर टी। यस दैट वुड बी बेटर। सर चलिए वो बात अब चलिए बाहर हम देख लेंगे। So we have a evening तो 2-3 पेपर है। दो आग्रह हो गया हम लोग और 3 पेपर है। सो 3 4 रौनक कुमार जी है क्या कोई 4 पेपर से अच्छा उसको 5 पेपर से ठीक है, वो कर देंगे। टाइम है 10 मिनट के लिए ब्रेक करेंगे। मैं आपसे हाँ वो अच्छा हाँ दे दो। थोड़ा सा देख लेंगे कैसे करना है, मुझे भी थोड़ा आगे लेना पड़ेगा। आपका मेल में भेजो या? हाँ एक मेल आईडी है। अच्छा एक
आप चार्ज कर सकते हैं। वहाँ क्या कनेक्टेड है? ये जो बोर्ड है उसका बैकएंड में दिया हुआ है, वहाँ पे चार्ज आप लगा सकते हैं लैपटॉप को।
भारत की आत्मा गांवों में बसती है। भारत के गांव जहां माटी की सुगंध में रचे बसे हैं जीवन के विविध रंग और रूप। गांव धरोहर हैं भारत की सदियों पुरानी संस्कृति के। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। भारत के गांव जहां माटी की सुगंध में रचे बसे हैं जीवन के विविध रंग और रूप। 6 लाख से भी अधिक संख्या में ये गांव धरोहर हैं भारत की सदियों पुरानी संस्कृति के। 32 लाख वर्ग किलोमीटर से भी लंबी यह यात्रा संकलित है मेरा गांव मेरी धरोहर के सांस्कृतिक कोश में और प्रस्तुत है भारत की इस अनूठी वेबसाइट पर mgmd.gov.in। भारत की ग्रामीण संस्कृति को खुद में पिरोए यह ऐप आपके हर तरह के फोन पर चलाया जा सकता है। प्रस्तुत है यात्रा माटी की सोंधी खुशबू में रचे बसे भारत के गांवों की। यहां राष्ट्र के अनेक गांवों की जीवन शैली से हम ऑडियो विजुअल के माध्यम से भी रूबरू होते हैं। यूनिक स्टोरीज सेगमेंट में परिचित होते हैं भारत के अनेक गांवों की अनूठी कहानियों से। यहां उत्तर प्रदेश के उमरी गांव में कई दशकों से जुड़वा बच्चे ही जन्म लेते हैं। असम के तालिग्राम में कचहरी साम्राज्य के अवशेष अतीत की धरोहर संभाले हैं। राजस्थान के पिपलंत्री गांव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का विशेष संकल्प उठाया गया है, जहां बेटियों के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की ओर भी कदम बढ़ाया गया है। कर्नाटक का मत्तूर गांव अपने आप में अनोखा है। अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की ओर रुझान के युग में यहां संस्कृत भाषा का चलन है। ग्रामीण धरोहर को समेटे इस वेबसाइट से गांव के सामान्य जनजीवन की जानकारी पाई जा सकती है। गांव की सांस्कृतिक विशेषताओं की जानकारी यहां पिरोई मिलती है। जाने स्वतंत्रता संग्राम की गाथा से जुड़ा है कौन सा खास गांव। भारत के हर गांव का अपना खास है खान-पान। हर गांव के विशेष परिधानों और खास आभूषणों का परिचय हमें यहां मिलता है। वेबसाइट पर गांव में उपलब्ध खास विशेषताओं को भारत के मानचित्र पर पिरोया है। पूरे राष्ट्र के विभिन्न स्थानों में व्यंजनों और पोशाक जैसी जानकारी पाई जा सकती है। MGMD स्मृतियों का एक यादगार संग्रह भी बना सकते हैं। जियो लोकेशन से आसपास के गांवों के बारे में भी आसानी से जान सकते हैं। और तो और किसी गांव के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी आप खुद भी डाल सकते हैं। ये भारत के गांव हैं, जहां माटी की खुशबू के साथ भारत की अनेकता में एकता पिरोई है। भारत की आत्मा गांवों में बस कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में शिकारीपुर तालुका का गांव इसुरु। धान के खेतों से घिरा हुआ ये वही गांव है जिसने 1942 में अपने आप को अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्र घोषित कर दिया था। 1942 ಅವರು ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಂದಾಯ
ನಾವು ಏಸೂರು ಕೊಟ್ಟರು ಈಸೂರು ಕೊಡೆವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಸಿ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೂ ಏನಿಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ಸಾಕಿ ಅಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಂದಾಯನ ವಸೂಲು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಾಗೇನಿಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಕಂದಾಯನ, ಎಲ್ಲ ಊರಾಗೂ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾಕೆ ಈಸೂರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯನ್ನ ಬುಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. जहां वीरभद्रेश्वर मंदिर में अंग्रेजों के खिलाफ तिरंगा फहराया गया. ಅದು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ರು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು. ಸಾವುಕಾರ ಮಗ ಒಬ್ಬನದಾನೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದು ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗಂಡಸು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ರು. आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारियों का गांव इसुरु एक प्राचीन गांव है. बात करें गांव की जनसंख्या की तो 1082 घरों की आबादी वाले गांव इसुरु में 4674 लोग निवास करते हैं, जिनमें 2371 पुरुष और 2303 महिलाएं हैं. यहां 74.50% लोग शिक्षित हैं. खेती पर आधारित इसुरु गांव में पक्के मकानों के साथ साथ कुछ कच्चे मकान भी हैं. पानी, बिजली, गैस जैसी मूलभूत सुविधाओं का यहाँ अभाव है. 30% आबादी इन मूलभूत सुविधाओं से वंचित है. यहाँ के लोगों के लिए पानी का मुख्य स्रोत अंजापुरा डैम है. यहाँ के लोगों का मुख्य कार्य खेती है. कुछ लोग सरकारी सेवा में भी कार्यरत हैं. धान और सुपारी की खेती प्रचुर मात्रा में यहाँ होती है. गांव में एक हायर सेकेंडरी स्कूल के साथ ही सरकारी डिस्पेंसरी है. दिन की शुरुआत के साथ ही कर्नाटका के बाकी गांवों की तरह महिलाएं घर के कामकाज के साथ साथ खेती का कार्य भी करती हैं. बच्चे स्कूल चले जाते हैं, वहीं पुरुष खेती कार्य के साथ मजदूरी के लिए निकल जाते हैं. यहाँ के वीरभद्रेश्वर मंदिर से हर साल एक भव्य यात्रा का आयोजन होता है. यूं तो ये पूरा गांव ही स्मरणीय और वंदनीय है, क्योंकि यहाँ के हर घर से एक क्रांतिकारी पैदा हुआ है. यहाँ का वीरभद्रेश्वर मंदिर और बनांसकारी देवस्थान आस्था और विश्वास का प्रतीक है. प्रांगण में लगे क्रांतिकारियों के स्मारक पत्थर जिन पे उनके नाम अंकित हैं, यहाँ की अमर गाथा कहते हैं. यहाँ के मंदिर प्रांगण में गांव के बुजुर्ग लोग बैठकर दिन भर चर्चाओं के साथ ही यहाँ की युवा पीढ़ी को अपने गांव के क्रांतिकारियों की कहानी भी सुनाते हैं. ಈ ಊರನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಊರು. ನೂರಾರು ಜನ ಜೈಲು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ, 6-7 ಜನ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಈ ಊರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಾಕಿ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಸಹ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕೂಡಿ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಸ್ಮಾರಕ ಭವನ 1972ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ತುಂಬ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಸ स्मारक भवनों सह कटता इधर है. शिवमोगा जिले के अंजनपुरा गांव में एक अनूठा पार्क है, जो 1942 की उस महान क्रांति और इस्सुर मलनाड क्षेत्र के किसानों के बलिदान को समर्पित है. गोरप्पा, ईश्वरप्पा, जिनाहल्ली मलप्पा, सूर्य नारायण चार, बड़कहल्ली हलप्पा और गौद्र शंकरप्पा के नाम हैं, जिन्हें 1943 8 मार्च को फांसी दी गई थी. इन्हीं अमर क्रांतिकारियों के कारण इसुरु गांव को एक अलग पहचान मिली है. ನಮ್ಮ ಊರು ಈಸೂರು. ನನ್ನ ತಾತನ ಹೆಸರು ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ. ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು. ಅವರ 4ನೇ ತಲೆಮಾರು ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಊರು ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ.
Hello. Not then, sir. Calling. Not joining them. नहीं call. Yes, Ah. sir. Hello. Can you hear us? हेलो पार्थसारथी जी सुन पा रहे हैं हमें? ओके पार्थसारथी जी Are you coming? Hello. Abhi's number is working. Abhi is calling. So leave it. Then I better leave it. Hello. Okay. Clear. Thank you for your participation. He joined. He joined, but I don't know what is. Anyway, just. Sir, Ah, already 5 parties. yeah. So I think
this should take into consideration. Hello, can you hear us? Parthasarathi ji. Please, can you start your presentation? You have 15 minutes. You have 15 minutes for your presentation. Yes, yes, you're very much audible. No issue, no issue. You can. Please. Right. Okay. Thank you very much, sir, for your presentation. So,
as I'm telling you that maybe some of the things we can look into. You can mute. Okay, thank you. Need the video after. So from